library and provide the environment where we can really educate our kids for the future, for the 21st century. We're not competing against anybody, but our kids have to have a level playing field. There were three approaches which we identified. One is the readers awareness and formation of user groups and create users demand so that the library can survive and thrive in our own state. Second is, continue with aggressive social media campaign like Twitter, writing letters, and then newspaper articles, etc. Third is, of course, representation to the government officials, because there has been so many library acts and Panchayat Raj Gazette information published to develop library in our state, and the apathy of the government is deplorable. So these three approaches I had summarized in one of my notes, and we thought that it will be useful to hear from you directly. We can exchange, thousands of emails and then messages, but still I feel that on a face-to-face, which is not possible now, but through Zoom, it's possible to observe and interact with people from all over our state and the people who are interested in developing this library. Let me give you, one of the critical factors is the readers' awareness. Let me give you one example where, I go to India almost every year, at least once or a couple of times. In our own high school and minor school, which is almost 100-year-old, my father actually went to the same school. There, what we have done, the old students, we have formed an alumni association and give scholarship to the students every year, some kind of prize award in the annual ceremony of get together for our old alumni association. But we decided that we will give 3 books to the, to each first, second, third student in each class. So there are 8 classes. So we give something like 24 books instead of giving cash prizes. Some cash prizes are given because there are poor students who cannot afford the books, actually their own textbooks. So these prizes were given in terms of books, and they were kept in the library in the school. They can borrow and people can share these books, and the teachers are assigned. Actually, one of the teacher is assigned. So he can take care of the books, and students can read and come and prepare their question answers and tell their story, tell some kind of story, recount the story, what they have learned. So this is how, at a very rudimentary level, and it is well appreciated by the teachers and the students and the parents. For last 10 years, we have been doing this. And it's a very small effort, but that also creates curiosity among students. So this has to be done, the awareness campaign for reading habits, when we are all spending more time on screen, has to be created from the childhood. The teachers have to be involved, the public has to be involved, the parents have to be involved. So it is a difficult campaign, but it's achievable through many volunteering efforts. That is one example I wanted to show. The other one I can give you from my own village. When I was visiting last year, they had a Ramcharitmanas in our village. They were celebrating Ramcharitmanas. And they had invited me to speak there. But I went there to speak, and that's where I found that the library of our childhood, Binapani Pathagar, is there in shambles. I mean, nothing is working there. I mean, I was very disappointed, and actually pointed out to the youth of our village area, about 4, 5, or maybe 6, 7 villages, the 3 panchayats. There, that I challenge them that you rebuild this library. It's so easy. Religious festivals is like opium in our own state and also in our own country.
The young people, they go and they join this movement for yajnas and religious festival. But building the library, I told all of them, it's very hard. Just try. And they seriously took that into consideration and wrote, 200 of them signed a letter, went to the video, and things are moving forwards where the library can be rebuilt and renovated. So this is a small scale campaign, but we can actually, all of us, those who are here, we can actually raise this kind of campaign in our own village or in our own block, in our own panchayat. So this is a call for some kind of united effort on part of everybody, who is volunteering for this effort to raise this awareness campaign, to create an aggressive social media campaign so that others can hear about the need for the library. Third is, of course, make representation to our political representative like MLAs and MPs and administrators, etc. So with that introduction, I would like actually to tell you something about what we have done from our OSA OPLI perspective. I mean, we have actually have funded the library in Berhampur, and there are other efforts going on to create model libraries. Nishikanta Sahu, our OPLI chair, will present that, and let him present. And I think we will go up for the video right now. Is that correct, Prashant? I can't hear you. Yes, we will go with that one. Okay, can you present the video, please? Yeah. So first Nishikant bhai will go, then our agenda says it, the video will come. So Nishikant bhai, apan bartman asparanti, mo apan ko presentation ta ready karuchi. Bas. I can also share also. Oh, okay, then go ahead. हाँ, अपन co-host अच्छे अपन share भी कर पारियो, किछ असुविधा नहीं, करन। समस्त नमस्कार। आमे काली समस्ते उत्कल दिवस पालन करछे। तेणु सीटा आमे गोटे रिमाइंडर आम पाई जे आम ancestors माने 100 years back ओडिशा को एकजुट कर देथिले। माने ओडिशा is the first state in India to be united based on a language. British Raj रे भी से माने सक्सेसफुल हिथिले। किंतु एबे इंडिपेंडेंट इंडिया रे आमे गोटे सिंपल रूल implement करिया पे सक्सेसफुल हे पबने। तेणु this is something we need to introspect what we can do while talking about vision 2024. कहना हमको बहुत खुशी लागुची जे हम समस्त इंटरेस्ट अछि, समस्त पैशन अछि। आमे संडे मॉर्निंग संडे इवनिंग के समस्त टाइम दवा को चेष्टा करूचे। हम 450 मेंबर अच्छे, बहुत लोगन सपोर्ट अछि। आमे जति चाहिमा बहुत किछि ही परिबो। तेणु vision 2024 is not a big thing, but if we work consistently, then definitely we can get success. High level के अपना आमे देखुचे जे जेकोनसी गोटे कंट्री रो डेवलपमेंट पाई गोटे नॉलेज बेस्ड सोसाइटी दरकार। आ 21st सेंचुरी पाई आमक दरकार इंटरनेट एनेबल्ड इकोनॉमी। ता सहित पीपल एम्पावरमेंट भी दरकार। तेणु ई जो तीनटा फैक्टर अछि एटा हमें अकम्प्लिश करिवा विजन 2024। आ सेटा केमते अकम्प्लिश करिवा जदी इफ यू हैव लाइब्रेरीज इन एवरी पंचायत। But is it something a big challenge? No. Let us go to our next slide. We have to focus first on user demand in public libraries. Is it something not happening? आपण देखिबे बर्तमान भुवनेश्वर रिसेंटली जो हमको व्हाट्सएप ग्रुप रे गुडा इन्फॉर्मेशन शेयर हितला जे भुवनेश्वर बहुत डिमांड होउची पब्लिक लाइब्रेरी रे। हम सुजीत मजरे से इन्फॉर्मेशन ता शेयर करथिला, सुजीत फ्रॉम बकलो फाउंडेशन।
this is very encouraging. जदि भुवनेश्वर लोक डिमांड रोची, जदि ब्रह्मपुर ई लाइब्रेरी लोक डिमांड रोची, जदि मालकानगिरी रोची डिमांड, आम गोटे ओडिशा सोसाइटी ऑफ अमेरिका गोटे सर्वे करथिला मालकानगिरी सेठी डिमांड रोची, माने देयर आर पीपल कमिंग टू बकुल लाइब्रेरी, प्रफुल्ल लाइब्रेरी, and recently another post आसीथिला गोटे वासुदेवपुर गोटे वीडियो आसीथिला रासुनाखला विवेक लाइब्रेरी. So there is a demand. So we don't need to prove to the government or anybody that there is no demand. It is a matter of implementation and efficiency. जे कोठी लाइब्रेरी डिमांड ही पबनी जदि भी के कन्विंस्ड हो नांती, we need to show these examples. These are proven models. There are thousands of successful models we can replicate. We don't need to reinvent the wheel. हमको प्रूव करिया दरकार नहीं आ गोटे किछ मॉडल लाइब्रेरी नुआ करिबा. It is happening in India, it is happening all over the world. Because the United Nations, they have been advocating from 2015 that public libraries will meet all the sustainable development goals to eradicate poverty all over the world. Many countries have signed up to make a priority in development of public libraries. Apne dekho the US re, in a democratic world, library start hitila 1833. Bhaktan ame 75 years hela amar independence. It is a big struggle in Odisha. Therefore, I would we should not talk, whenever we are talking, we should not talk about the spending in libraries. This is not a spending, this is an investment. The US rate for every dollar spending on public investment in public libraries, there is a return of $4 to $9. This is not a spending, this is an investment in people, in the educational infrastructure. I would tell you, देखो हम ओडिशा रे 5000 मद दुकान अछि, liquor stores. In 2000, from 2000 to 2023, there is a growth of 4000% in liquor sale. In contrast, Americans claim they take pride the number of public libraries in USA is much more than the famous restaurant chain McDonald and Starbucks. तेणु आमे हिस्ट्री ओडिया हिसाब रे आमे काली उत्कल दिवस पालन कले आमे निजको निज देखिबा दरकार जे आमे को भलिया हिस्ट्री निजको जोड़ीबा. अमेरिकन मान को भलिया जोड़ीबा जो माने निजको प्राइड नउछंती जे से मानको मैकडॉनल्ड स्टारबक्स अधिका ना हमरो लिकर सेल अधिका होची 4000%, कारण हमर जो लाइब्रेरी गुल हला 2000 रे, किंतु ए 20+ years भीतर हमर increase is 4000%, किंतु libraries has gone down. Finland, सेटा हला आउटे country which is a developed country, 6 years consecutively it is getting the happiest country award, and they invest big time in public libraries. देखिबा इंडिया कथा देखिबा, union budget has allocated funds for public libraries in 2023. Central government is recommending to adopt Karnataka library model as a model for development in all over the state, all over the country. Within a 1 year time span, 33 lakh kids have been enrolled in Karnataka digital public libraries, and they have thousands of libraries. One IS officer in Jharkhand could build 150 libraries in 100 days. We should not give government enough time. Government has taken enough time because it has been 75 years since independence. Tamil Nadu enacted the public library law in 1948. Then when we ask that we need to give government enough time, that is not reasonable.
We have to tell government that not enough work has been done since 1948. Because if we need to respect our, they need to get the respect from people, they need to follow the rules. And they need to make Odisha better than others. On top of that, we have seen in Tamil Nadu also, there are 287 crores in 2022 alone. One Kerala CM can open libraries in all his wards. Our CM has received the best CM award. This is a big contrast. I'm not asking who is good or bad. What I'm saying, we have the same expectation we need to set with our government. We need to beat or meet they need to beat or meet our expectations on public libraries. There are 4,000 digital libraries to be established in Andhra. Haryana government has a similar plan. And there is massive recruitment in Madhya Pradesh, and Odisha students are migrating to Madhya Pradesh because of this recruitment process. In contrast, what is happening? We have these public library laws. And the CM's 5T vision is really visionary. If it will be enforced, it can make wonders in Odisha. I think this is one thing we need to stick to all the time. If we stick to this, we will get success for sure. Good part is we have circulars already developed. We have approved laws. As you can know, I'll not repeat all these things like Panchayat library laws, circulars were already sent to BDOs. We have library rules notification in 2016. We have no funding issues because Odisha is rich in mineral fund collections as in India. And there are 16.5 billion rupees CSR spending in 2018. In contrast, what we are getting, Odisha is the 9th poor state as per Niti Aayog in 2022. 46% of people are poor as per statesman. And there is an uncertain future of public libraries in spite of 75% independence. Government can spend 1,200 crore rupees for public library for building sports activities just in 1 year. 1,200 crores for in 1 year just to support 3 stadiums. And they cannot support the libraries all over Odisha. What do we want? We want also on top of this one, what we see, Odisha has liquor-enabled economy. We need to think about knowledge-based economy or internet-enabled economy, not liquor-enabled economy. There is 4,000% growth in 22 years. And we have 5,000 liquor shops. But we could not have that many libraries. In America, we see there are more libraries than restaurants. But we make a record, we have 5,000 liquor shops in Odisha. As you know, there is a saying, heat the iron when it is hot. Look this thing, how meaningful to this in this context. These are the opportunities we have compared what is happening in the world, what is happening in India, what is happening in Odisha. And right now, we have 2024 election. Government is taking a big name because of 5T. And we have the funding, we have the laws. If we not act next 2-3 months, sincerely and persistently, then we cannot get any results. And this is the perfect time. We all are united. We have 450 members. If we work sincerely, definitely we'll get success. I think this is very important for us. Nishikanta, Okay. 2 minutes wrap up karo. Okay.
more focus on action plans. Kon ame Okay. kare Can you send Kasan Das? Can you send the code, please? I'm sending it. Okay, thank you. And these are our action plans. As you can see, if you follow this thing, we can get some accomplishment towards our Vision 2024. And we can enhance this one, add more things as required based on our suggestions. But first thing is that we need to ask government on 5T, because library laws are under 5T. If 5T is talking about transparency, time bound, teamwork, technology, then what is stopping this one not to happen? If there is already law, it is government's responsibility, moral responsibility to act, to implement. If not, then you need to think about to ask consistently in public forum what is happening in 5T. And also we need to advocate for budget allocation, interim budget allocation every quarter. And we need to demand for fast track implementation of library laws, both library laws and Panchayat Raj circulars. Also, we need to bring all libraries under single umbrella, because libraries are under different groups: Panchayat Raj, culture department, and urban development, IPR department. Everything has to be under one umbrella. Also, we need international experts, national experts with reputation, who can give the guidance. It should not be by somebody, an IS officer, OS officer who has no background on public library development. This is something we need to think about, we need to push forward. And this is the basic model we have to think about in all libraries: computer, internet room, community centers, reading room. These are the three basic things we expect from the libraries. And to manage the libraries, we need library automation, both library automation as well as a dashboard, kind of develop a dashboard to manage the libraries all across Odisha. And we need civil society members to be actively involved in library management. And also we need skilled professionals to manage the libraries. On this one also, we need public awareness to build a demand, because people need to know the benefits so they can build a demand. Because without a public demand, libraries will not succeed. And also we need to keep a target on UN Sustainable Development Goals, how our libraries will provide the services to meet United Nations Sustainable Development Goals. And also we can have more library program so that people can participate and contribute. And this is what OLN can do. We can discuss in the rest of the meeting today by our esteemed guest as well as members to discuss how we can contribute, how we can accomplish this Vision 2024. We need to discuss very focused towards a vision, and what are the steps we can accomplish, and to accomplish Vision 2024, what are the steps we need to do. And this is, as OLN member, we need to think how we can change the mindset of public libraries, because public library is not about books, it is about services, and there are countless services. Books is one of the part, and we need a plan how efficiently we can follow up the state and district administration. We need to identify public speakers who can speak on the importance of public libraries to the public as well as to the administration. And we need to talk about how to involve print media, news articles, social media, TV campaign, and this will be done by Kasan Bhai will speak about on this one. And regarding public awareness, Sandeep Mosa will speak about that. Then we'll talk about raising issues in assembly and OLN meeting every month, how to file RTI, how to file PIL, and how to do signature campaign,
and how we can strengthen and brand OLN. And Ajay bhai will speak about how the three-pronged approach later in detail. And now I request San bhai to share OSA's effort, maybe because many of us may be interested to know what OSA has done in the past on library fronts, and it will be helpful. धन्यवाद निशिकांत भाई आपण स्क्रीन शेयर बंद करंतु मु ओसार हमर जे वृत्त चित्रडी आमे करिछु आमे देखैबु ता पूर्व मु समस्त कहबी आमे परस्पर को प्रश्न पचारिया अपेक्षा आमे एटा भाबिबा जे जो पाठागार पे दायी किए पाठागार करिवो किए पाठागार को जीव किए पाठागार रो आवश्यक कोन आमे निजको निजे प्रश्न पचारिबा पुणी थरे आसीबा प्रथमे चलंतु वृत्त चित्रडी देखिबा I think, hello. Yes, Yes. start. Odisha through the model public libraries, which can be an inspirational model to replicate similar public libraries at every district and block level in other parts of the state. A well-integrated public library system has proven to be the key catalyst in socio-economic development. Our mission is to establish information and communication technology, or ICT, enabled model public libraries that will function as the resource centers and information, knowledge, skill development, and community welfare. It all started with the major natural calamity in 2013, Phylin. Funds collected to rebuild affected areas gave the idea of a better library system for residents. Of course, it took persistent effort, but the library was inaugurated by the Chief Minister in 2017. The library officially opened to the public as e-library in April 2018, with hundreds of students taking interest to be part of the free facilities for the first time in Berhampur. The library provides access to high-speed internet, in addition to traditional library facilities and access to the adjacent community center for learning, information exchange, collaboration, and public congregation. Besides the BMC, passionate, progressive-thinking local community members are working towards its success. In 2018, OSA signed a MOU with the Burhanpur Municipal Corporation to provide guidance, infrastructure, and expert advice for successful library operations. A new MOU was signed at the beginning of 2021 for another 5 years. The library has conducted multiple seminars, conferences, and workshops on women leadership, healthcare, job preparations, and education. One of the noteworthy events was a skill set development workshop inaugurated by Subrata Bakshi of Skilling Odisha in collaboration with the local ITI. Additional libraries are almost ready to open to the public in the Mayurbhanj and Balasore districts with the help of local authorities. We continue to influence the government of Odisha to build similar libraries across the state in each district and panchayat. The government of Odisha is now considering to start similar initiatives in each panchayat. Multiple library conferences were held in Odisha, bringing in think tanks and library activists to work together for this cause. OSA continues to motivate authorities, academicians, librarians, community leaders, journalists, and influential individuals for this movement. We appeal to you all to join hands in building well-integrated modern public libraries at all district headquarters and Grama Panchayats in Odisha as a top priority. Let's call it a Mo Library Initiative. We are also actively soliciting champions among Odisha Society members in North America who would sponsor one or more libraries in their own block, panchayat, or district. Please contact OPLI at odishasociety.org for additional information. Thank you for your time. Joy Odisha.
Thank you. Thank you, Prashant, for that video. Now I invite Sandeep Das Verma. Sandeep Babu, upon Achanti? हाँ अच्छी Acha, acha. Sandeep Das Verma to talk about public awareness and user demand, which is a key requirement for sustainability of public library, why and how. And he's a champion of this, and he has been writing extensively in the group, and also, you know, he has written a beautiful article which will be published soon. So we invite Sandeep Babu to speak for 5 minutes. मोर स्क्रीन टा लेखा है निशिकांत साहू मु जाननी कहीं कि मोना It's because आपण से register बेले कौन करते हुए से मुझ कोई पर भी नहीं मो बदले दे छे आपण आरंभ कर अंबा दे दे समस्ते एनीवे सो मु एठी अछि मोर एतकी कहिबार अल्प बेसी किछि नाही कथा हला जे आपण गोटे लोक आसिकरी कहिबो जे मु एमती करची सेमती करची आउ मोर गोटे चाकरी दरकार सरकार मते चाकरी दियंतु आउ जने कहिबो से किछि कहिला नै किंतु कम्युनिटी रो मेंबर माने कहिले जे लोकटा लाइब्रेरी करिछि बा जहा करिछि एटा गोटे हमरो बहुत उपकार करूछि तेनु सरकार एई लोक जहा करूछि सेटा अन्य माने भी करंतु तांको सुजोग दिया जाऊ आ एटा को बढ़ेइले हमरो उन्नति हबो हमरो सोसाइटी रो ए दी जण जदि लोक दीटा मॉडल देखिले ताहले आपण गवर्नमेंट ओडिसा रे नवीन पटनायक को बदल रे आपण चीफ मिनिस्टर असंती आपण कोउटा को देबे अटेंशन मो प्रश्नटा आपण पाकु पहुंचिला कि सो ए जो अवस्था रे मोर ओपिनियन हला जे मु जाइथली ये को आपनकर गत ओडिसा जते बेले जाइथली मु जाइथली बाजीराउत छात्रावास बुझिले मु जाइथली गांधी स्मारक निधि कटक रे जो अछि ताकू देखिया को जाइथली मु देखली खबर कागज रे बाहरुची बहुत कथा किंतु लोक जानू नाहंती तांकर विसिनिटी रे जो माने अछंती से माने भी जानू नाहंती कहना सर्विस टा आउ जाउनी जो जिनस थिला नवकृष्ण चौधरी जाइकरी कोरापुट रे पहुंचिले गां लोक भर्ती हो जाउतले सी जाइकरी बस रु चालिकरी जाउथले 3 माइल सेई जिनसटा मु भाबुची से जो सर्विस टा आमे जदी देई पारिबा लोक जानिबे जे हां मो पिलाटा लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी गोटे हेले तार किछि सुविधा पाइबो बही मु जोगेई पारुनी सी जाऊ सेठी अन्य माने जो पढ़ा पढ़ी करूचंदी सेठी बसिकरी पढ़ू घरे तो जागा नहीं एई जो जदी एई भाबरे आपण चिंता करिवे से लास्ट मैन जोटा गांधी कहितले ताहले आपण देखिबे लोक मानकर एई जो कैलासनेस बदली जीवो से माने गां रे आपणकर अष्टप्रहरी करूचंती विभिन्न रकम रो जिंस होउची बुझिले हमर मोर मने अछि मु जतले इंजीनियरिंग पढुथली ऑफ कोर्स हाफ ए सेंचुरी बैक 60 वर्ष तळे मो आमे जतले पढुथलु सेते बेले आपणकर माने गोटे इंजीनियरिंग पढ़िले माने बहुत बड़ कथा कटक रे आपण बाका मो घरु बाखराबाद रु रेवेन्सा कॉलेज साइकिल मारिकरी गले सबु पान दुकानी जानिथिले मु को साई रे रहे को बापा कोन करंती मु कोन करे सबु से माने खबर रखुथले
किंतु आमे माने बही पाइबा गोटे गोटे आश्चर्य जिनस थिला जोटा आमे तेणु आमे कौन करूथुलु जहा पाइलु पढुथुलु आपण देखिबे हमर इंडियन मानकर नॉलेज टा बहुत ब्रॉड किंतु डेप्थ टा बहुत कम अमेरिका रे मु आसिकिर देखिली जे जे जहा जानिची सेटा डीप जानिची किंतु आमे सबु सब्जेक्ट रे टिके टिके जानिचु टिके टिके नॉलेज अछि एटा काहे कि ना हमर जहा मिलुथला आमे पढुथलु बुझिले सो ई जो डिफरेंस टा एटा पाई दरकार एक्सेसिबल पब्लिक लाइब्रेरी अच्छा এই जो एक्सेसिबल पब्लिक लाइब्रेरी आमे कहूचु काहे कि ना आपणकर पब्लिक लाइब्रेरी रो गोटे सरकार कर गोटे दायित्व अछि बजेट अछि से माने ताकू चळेइबे किंतु आमे यदि एथि मु देखुची बहुत लोक तांकर गोटे प्राइवेट लाइब्रेरी अछि करचंती तांको बापा अजा किए बा गोटे समय रे उत्साह हेकरी कम्युनिटी रे करचंती गोटे लाइब्रेरी किंतु चळेइबा पई जो खर्च जेहेतु कम्युनिटी फील करूनी से माने सर्विस दउचंती बोली अनेक बंद हे गलानी जो माने सर्विस दउचंती सेमानकर भी अन्नान्य असुविधा अछि कने सेमाने सेई जुगरे रही आइचंती गोटे न्यूज़पेपर गोटे टेबल रे पडिची दि चारटा बही अछि बस सेईटा सेमाने भाबुचंती जे चलियो किंतु वर्तमान लोक आईपैड माने आईफोन जुगरे आपणकर वाईफाई एनेबल्ड लाइब्रेरी दरकार जो थरे समान जाईकरी बसिबे जहा चाहिबे करि परिबे तांकर दरकार कंप्यूटर सेठी कने बहुत लोकंकर आर्थिक सामर्थ्य नाही जे कंप्यूटर टे किनिकरी देबे तांको पुओ को ओडिसा सरकार दउचंती कौन होउची आपण माने जानि चंती अंगे लिभेई थिबे तेणु मो कथा हला जे एई जो सर्विस टा लोक पाउ नाहंती आ प्राइवेट लाइब्रेरी अनेक कोन करूचंती ना बापा जे करथिले से निज घरे रही कि सेठी सेटा को गोटे एक्सेस कर देइचंती केते बेला अवेलेबल देयर इज नो पब्लिक ये किछि लोकंकर तो अछि हां आपण सुजित्र लाइब्रेरी की प्रसन्न बाबू को लाइब्रेरी एगुडा रे अछि हां आमे मु सुजित लाइब्रेरी देखिछि प्रसन्न बाबू लाइब्रेरी देखिनी किंतु सुनिछि पुर चळेउचंती 40 वर्ष हला सो सी जो जिंस गुडा किंतु ताकू केमती मॉडर्नाइज करिवा से चिंता होउनी आ मॉडर्नाइज न कले जदी हमर एडुटेनमेंट न रहिबो कंप्यूटर एक्सेस न रहिबो डिजिटल डिवाइड भांगिबा पई आ जदी आपनकर माने वाईफाई न रहिबो लोक काहे की आसीबे लाइब्रेरी दी रकम रो लोक जानती गोटे हला बुढ़ा लोक खबर कागज पढ़िबे कि बही पढ़िबे जानती आउ गोटे लाइब्रेरी हला जे जो यंग पिला से माने पढ़िबा जगह नहीं घरे जीवे आपण जयदेव बिहार रिसेंटली सुनिथिबे जे मंत्री जाईकरी पहुंची गले सेठी देखिया पाई केना लोक माने बाहरु शहररु आसीकरी गाँरु आसीकरी घर भड़ा नेइकरी पढुचंदी सेठी मंत्री पहुंची गले से कौन से प्रमाण हला जे लोक जो थरे इंटरेस्टेड हेबे यदि सर्विस पाइले सेटा पॉलिटिकल लोकन को अट्रैक्ट करिवो आ तांकु गुहारी करी किछि हबनी अजय बाबू गोटे पोस्टिंग करथले तांको गाँ रे पिला मानकु से उत्साहित कले जे तमे जाईकरी एसडीएम को देखा कर लाइब्रेरी गाँटा हबो 250 पिला दिन जाईकरी पहुंची गले जाईकरी कहले जे हमर एमती हेनी immediately what he wrote is that money was sanctioned आउ थरे गोटे जब बुधे से पिला जाईकरी पहुंची गले लाइब्रेरी टा हेई जीवो प्रायोरिटी पाई जीवो ओपनिंग डे डिक्लेयर हेई जीवो तेणु मो कथा हला जे हमर जेतकी प्राइवेट पब्लिक जहा लाइब्रेरी अछि सेइथिरे आपण माने लोकन को सर्विस दो पई चेष्टा करंतु जोथिरे से माने चाहिबे आहुरी एमती लाइब्रेरी हो ओडिसा रे चारियाडे मु एथर जाईकी देखिली गोटे हमर त्रिलोचन कानन गोबली जने कटक रो मेयर थिले
से गोटे लाइब्रेरी 6 महला बिल्डिंग आरंभ करथिले से जेतेबेले चली गले ये रु मेयर रु से जगहटा आपनकर गोटे गोटे महला रे रहिला आउ हेलानी वर्तमान ताकू कोन करचंती भांगी देइकरी सेठी आपनकर खाननगर रे तयारी होउची बस स्टैंड किंतु से जो लाइब्रेरीटा भांगी देले ताकू अन्न कोठी करिवारे किछि प्रपोजल नाही पेपर रे थिबो किंतु लोक जानि नाहंती आपनकर स्वराज आश्रम कटक रे गोटे लाइब्रेरी थिला मो पिला दिन रे आमे रोज सेठी जाइकरी पढुतलु से लाइब्रेरी रे आपनकर लंडन रो इकोनॉमिक टाइम्स आसुथला गांधी विषय रे बही थिला आपनकर गांधींकर लेखा थिला आमर बुधे सेठी 30 टा से समय रे 30 टा खंड खबर कागज आसुथला हां सो एई जो लाइब्रेरी गुडा किंतु लिजेसी लाइब्रेरी ताकू कोन कले ना चलेया पई पब्लिक ये को देई देले काहाकू आपनकर पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट रे जो लाइब्रेरियन थिले से लोक मानकर कोउटा सुविधा कोउटा असुविधा से न देखिकरी जेते बेले आपनकर इच्छा हला बंद करी घर को चली गले कि मंत्री आसिकरी कहले आज मीटिंग करिया से सब बंद कर देले एई जो हला लोकंकर गोटे एश्योरेंस रहिलानी हां आमे मोर मने अछि आमे देखो आज अमुक आछंती आपनकर हां जानकी पटनायक आछंती कि महताब आछंती से बंद हे गला लाइब्रेरी एई जिंस गुडा हबारु कोन हला ना परे आउ आपनकर से लाइब्रेरी जिबार जो माने जाउथले से माने बंद कर देले जेमती आपनकर लाइब्रेरी रे अटेंडेंस कमी गला तापरे गवर्नमेंट देखला लाइब्रेरी ते इंटरेस्ट नहीं एते कम लोक आछंती से कोन कला आउ से एकू लाइब्रेरियन रो रिटायरमेंट करी गला आउ से लाइब्रेरियन नहीं तापरे गोटे पियन रे किछि दिन चलला तापरे से पियन भी रिटायर करी गला पुराना लाइब्रेरी वर्तमान माने अपन जते बेले गले देखिबे बंद ही रही छी कि जणे कि केते बेले गोटे पियन अछि कि कोन एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट रे से खोला होछि एई जिंस गुडा आपनकर माने लाइब्रेरियन और कॉन्शियस पब्लिक एको चेंज करि परिबे आ सेटा जदी आपण माने मु जो प्रथम प्रश्न पचारली लोक जदी हम चाहिबे जे लाइब्रेरी ताले गवर्नमेंट करिया बाध्य एग्जांपल अजय बाबूंकर गाँव कथाटा जोटा मु कोट करी किंतु आपनकर इवन जो आपनकर ये देइथले से एमपी थिले तांकर गोटे एमपी लैड अछि से एमपी लैड रे गोटे हॉल गोटे पब्लिक मीटिंग हॉल गोटे बाखराबाद रे सनशाइन पड़िया पाखरे अछि गांधी भवन तक कहंती एते गोटे लाइब्रेरी अछि केबे खोला होएनी सो ई जो माने गोटे डिस्परेट कंडीशन एटा केमती चेंज करिवा आपण माने भाबंतु मु जानिची जणे मते बहुत गाली फाली कले आपनकर फोरम रे तापरे कहले मु करिनी आउ जणे मो फोन की यूज करी करिची हां सो आपण मानक मधरे जदी किछि अछि राग अछि कि कोन एडवाइस सुनिया पे आ राजी नहंती से कथा कहंतु माने करिवानी आउ गुहारी कले किछि हबनी हमरो दरकार हमरो सपोर्ट कम्युनिटी हमकु कहू जे हां बरहमपुर लाइब्रेरी रे हो बरहमपुर लाइब्रेरी हला गोटे सेथिरे 200 टंका चार्ज कले पिला माने जो माने आसीबे अरे पब्लिक लाइब्रेरी इज फ्री ऑल ओवर द वर्ल्ड हां व्हाट इज दिस नॉनसेंस दैट पब्लिक लाइब्रेरी रे 200 टंका मासकु देले आसीबो केते लोकंगर क्षमता अछि से 200 टंका देइकरी तांको फैमिली वर्ष को 2000 टंका देबे कि 2400 टंका देबे देइकरी पिला को पठेबे लाइब्रेरी को सो एई जिंस गुडा भाबंतु बकुल लाइब्रेरी गोटे हेइथला किंतु मु एथर गली देखिली एपर माने प्राय फांका काइना ए जो कोविड समय रे लोकंकर अभ्यास छाडी गला तेनु मु आपण मान को अनुरोध करूची सर्विस टा केमती बढ़ेवा सेई थ्रू रे आपणकर माने गोटे लाइब्रेरी जो गोटे चालुची लाइब्रेरी से लाइब्रेरी जी अछंती जाउचंती लोक आसुचंती जेतकी तांकु पचारंतु
जे कौन आउ अधिका आपनकर सर्विस हेले मते ये दबो माने डबल लोक आसीबे आपण माने चिंता करचंती अन्न माने आसीबे कोन असुविधा होची आपनकर Sandeep Babu, sorry, अपन टिके wrap up कर दियंतु, and then there are others, you know, who will also pitch in. मु रैप अप एठी बंद करूची बाणी द्वारा मोर इच्छा नहीं जदि किछि मैसेज गला गला थैंक यू Thank you very much. से जो कहले संदीप बाबू, it's a wonderful piece of suggestion. Awareness has to be created among the service. भाई किछि दिन पूर्व I had met one of the justice, Supreme Court justice. सी अछंती जो ओडिशा माइनिंग एरिया डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रो चेयरमैन. It's like a several $billion project. से मते थरे कहितिले कहले जे पब्लिक has to peacefully agitate. तुम न करले जे स्क्विकी डोर नीड्स ऑयल केही जदी न करिवे केबे हबनी सेटा. मु आम गाय कथा रे जो एग्जांपल टा देउथली से माने जदी जाई करी गुहारी न करिवे कलेक्टर पाखरे वीडियो पाखरे से वीडियो कलेक्टर काहे करे बुझबे किछि कई करबेनी. And money is not the issue. How to maintain the library, how to sustain the library, that is another thing. So now I would invite Prashant to speak a few words about the social media campaign. धन्यवाद भाईना. Be brief and then we are running out of time. Yeah. मते जो 300 सेकंड दिया हिची से भितरे मु आपन किछ कहबा चेष्टा करबी. कथा होची मोर प्रसंगटी हिची एक्टिवली एंगेजिंग प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, पब्लिक स्पीकर टुवर्ड्स आवर विजन. देखा देखी, लेखा लिखी, शिखा शिखी, सुना सुनी, जना सुना एई सब विषय नै कि आमे प्रतिदिन बंचुचे और आगक बढ़ुचे. तेणु आज जो माने मोठु ज्येष्ठ अछंती सेमानकु प्रणाम जणै कि आ जो माने कनिष्ठ अछंती तांको सम्मानास जणै कि आरंभ करूची कथा. दी जण मधुबाबू आमको दी पद कथा कही जाइथिले. कलिंग धरणी महिमा स्मर स्मर हेबारे जाग जाग लाग लाग हे उत्कलर भाषारे. एटा मधुसूदन राव कहिथिले. उठरे उठरे उत्कल संतान उठिबु तु केते दिने पूर्व गौरव पूर्व साहस पड़िब कि मन केबे माने. मधुसूदन दास एटी कहिथिले. आमको सदा बेले किए ना किए जुग पुरुष माने उठेबारे लागि छन्दी किंतु आमे उठिनु ए पर्यंत. मते जहा लागि जोडा प्रणव भाई लेखुचंदी हमर 72 जण जो माने हेइथिले लेखिचंदी आसी बोली किंतु अछंदी हमर 35-36 जण. तेणु एई 35-36 जण हम संगे अछंदी जानि कि मते बहुत खुशी लागुची. काहे कि किछि होनी कहवा अपेक्षा जहा होची ताको नै चलंदो आगा को बढ़िवा. हमर कथा होची जे हमर पाठागार टिए दरकार. काहाको चाकरी दरकार, काहाको पब्लिशर चाहुथिबो जे मो बही बेसी बिका हे कि पाठागार रे रहू. जो माने अनएम्प्लॉयड यूथ आमर जो माने बेकारी अछंती पाठागार संबंधी भाई माने से माने भाबुथे हमकु चाकरी डी मिल समस्त सब मिलिबो. कथा होची पाठागार काहे. समरेंद्र भाई आमर मंच रे लेखिथिले जे 900 पाठागार रु 40 टी पाठागार ही सक्रिय अछंती. भाबिबार समय आसीची किंतु भाबुची किए. मु तांको कहिथिली जे आमे सभे अनेक किछि हेउनी भितरे दोळायमान. तेणु समाधान कौन समस्या आलोचना होची. आ गोटे समस्या आमे कौन समाधान पंथा बाहर करिछु कि. प्रणव भाई ट्विटर रे दिन राति लगातार भाव में प्रचेष्टा करी करी चीफ मिनिस्टर हो कि प्रतिनिधि मान हो कि शासन कल हो सी कहले किंतु तांको कथा परे छाणतु आम भितर केते जण तांको ट्विटर को सपक्ष कले सेटा होची कथा. तापर जदि आमे जदि गोटे जिनस म आपन कहबे आज्ञा कि अमंत्र मंत्रक्षर नास्तिम नास्ति मूल मनौषधम अयोग्य पुरुष नास्ति योग्य शस्त्र दुर्लभ. प्रत्येक शब्द रे मधुरता अछि, प्रत्येक उद्भिद रे गुणकारिता अछि, प्रत्येक मानव रे सक्षमता अछि किंतु से आसक्ति आत्म प्रति ही विरल. मु बहुत दिन हला हमर जो सामाजिक मंच रे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो सबठे लेखि लेखि आसुची जे आज्ञा पुस्तक टिए किणंतु पढंतु, ज्ञान आहरण करंतु, पाठागार टिए मंदिर टिए गाँ टीए पाठागार टीए. किंतु मु देखुची आमर जो माने शिक्षित गुणी ज्ञानी अछंती सेमानक कान रे एटा पडुनी. काहे कि एटा अमुक लोक लेखुची, एटा प्रणव लेखुची मु काहे कि लाइक मारी, एटा प्रशांत लेखुची मु काहे कमेंट देबी, एटा निशिकांत कहूची मु काहे कि सुनिबी. आज्ञा आपण आत्माभिमान धरि बसंतु
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମ ଜାତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତୁ ନା ମିଶିକି ଫାଇଟ୍ କରିବା। ଦାଶରଥୀ ଅଜା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆସେ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ସମସ୍ତେ ଫେସବୁକରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି, କେହି ନ ଜାଣିବେ କେହି ନ ଦେଖିବେ ନ କାନ୍ଦିବେ ଥରେ କେହି ଚାଲିଯିବି ଏକା ଏତିକି ମାଗୁଣି ତୁମ୍ଭ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ଯଦି ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସିଲା ଆମେ ଓଡିଶା ଲେଖିକି ଚକୁଳି ଫଟୋ ଏଣ୍ଡୁରି ଫଟୋ ସବୁ ଛପାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ପାଠ ପଢି ପାରୁନି, ତା ପାଇଁ ପାଠାଗାରଟିଏ କାହିଁ? ପିଲାଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାଠାଗାରଟିଏ ପଢିନୁ, ଆମେ ପାଠାଗାରଟିଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ, ଯେଉଁ ପାଠାଗାର ଥିଲା ସେଗୁଡିକ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ପାଠ ପାଠକ ପାଠାଗାର ସଭିଏ ଦିବ୍ୟ ସୁଧାଧାର। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପାଠାଗାରଟିଏ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆମର ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କହିଥିଲି ଯେ ପାଠାଗାରଟିଏ ମନ୍ଦିରଟିଏ, ଅତୀତରେ ଯେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ବ୍ରତ ଭୋଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଭା ଆଲୋଚନା ତର୍କ ସବୁ କରୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠାଗାରଟିଏ ସେ ତାର ସ୍ଥଳ। ପାଠାଗାର ମାନେ ନାହିଁ ଖାଲି ବହିଟିଏ ଖୋଲିକି ଆମେ ପଢିବା। ଆଜିକାଲିର ଯୋଉ ସଂସାର ଯୁଗରେ ଯୋଉଠି କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏଇ ସବୁ ଆସିଲାଣି, ଗୋଟିଏ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛେ। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ପାଠାଗାର ପାଇଁ ଆମେ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟି ଚଲେଇଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ କହୁଛୁ ବୁଝୁଛୁ ଶୁଣୁଛୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଦବ କିଏ, ଓଷା ଆମ ପାଇଁ କରିବ କଣ, ଆପଣ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଆମକୁ କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କଣ ସରପଞ୍ଚ ନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ MLA କିଏ ନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର କିଏ MP ନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଶାସନ ମଞ୍ଚର ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟ୍ୱିଟରରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଫେସବୁକରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲନ୍ତୁ, ଶସ୍ତା 2 ପଇସାର ଅଣାଟାର ମୂଲ୍ୟ ନଥିବା କବିତା ପ୍ରବନ୍ଧ ସବୁ ବାହାରୁଛି। ଆପଣ ପାଠାଗାର ପାଇଁ କେତେଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ସେଠି ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ପାଠାଗାର ପାଇଁ କେତିକି ବିଚଳିତ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦରକାର ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ମିଳିବ, ପାଠାଗାରଟିଏ କାହିଁ? ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଠାଗାରଟିଏ କାହିଁ? ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଚାରିପଟେ ଯୋଉ 20 କି 30ଟି ଗାଁ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇ ଗାଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟି ପାଠାଗାର ଅଛି। ଯଦି ନାହିଁ ନିଜେ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ପାଠାଗାର କଥା ଆଜିର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରାପଅପ୍ କରୁଛି। ପାଠାଗାର ଆଜିକାର କଥା ନାହିଁ, 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ପାଠାଗାର ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଥିଲା ପାଠାଗାର ଟେମ୍ପଲାର, ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଥିଲା ପାଠାଗାରଟିଏ, ପ୍ୟାଲେସ ରଜା ଘରେ ପାଠାଗାରଟିଏ ରହୁଥିଲା, ଏବଂ ପର୍ସନାଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପାଠାଗାରଟିଏ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର 7th ସେଞ୍ଚୁରୀ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଲା, ମାନେ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାହେଲା, ଯୋଉଠିକି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ପଢିପାରିବେ। ଆମେ ଯଦି 17th ସେଞ୍ଚୁରୀରୁ 9th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ସେଟା ସମସ୍ତ ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆସିଲା। ଆମେ ପାଠାଗାର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଧରିକି ଆମେ ବସି ପଡିଛୁ ଯେ ବହିଟିଏ ପଢିବା। ମୁଁ ଭାବି ମୋ ପାଖରେ ଯଦି 5000 ବହି ଅଛି, ମୁଁ ପାଠାଗାର ମତେ କଣ ଦରକାର? ନା, ପାଠାଗାର ହଉଛି ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ପାଠାଗାର ହଉଛି ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଠାଗାରଟିଏ ପାଇଁ, ପାଠାଗାରକୁ ପିଲାଟିଏକୁ, କିଶୋରକୁ, ଯୁବକକୁ, ବୃଦ୍ଧକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନ୍ଥା ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି, ଯୋଉଠି କି ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ପାଠାଗାରଟିଏ ନାହିଁ। ଲାଜର କଥା, ଆମେ ସଦାବେଳେ 50 ବର୍ଷ ପଛରେ ଅଛୁ। କ୍ରିକେଟରେ ଆଗରେ ଅଛୁ, ଫ୍ୟାସନରେ ଆଗରେ ଅଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ହନୁକରଣ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅନୁକରଣ କରିପାରୁନୁ, ଆମେ ହନୁକରଣ କରୁଛୁ। ଯଦି କଣ ହେଲା ଫ୍ୟାସନ, ଜାତି, ଧର୍ମ, ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଆମେ ଅନୁକରଣ କରୁଛୁ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଠାଗାରଟିଏ ପାଇଁ ଏଇ ସହରରେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହୁଛି, ଆପଣ 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ଏପାରିରେ 15000 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଏ ସହରରେ 100ଟି ପାଠାଗାର ଅଛି। 100ଟି ପାଠାଗାରରେ ସାଂସ୍କୃତିକ, ସେଇଠି ଡ୍ରାମା ପେଣ୍ଡେଲ ଭଳି ଅଛି, ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି, ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ ଅଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି। ସଭା ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେ ଭିଡିଓ ସବୁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ପାଠାଗାରଟିଏ କରିବା। ଆମ ହାତରେ ଯଦି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ଆମକୁ ଦିଅ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଦିନ ମଦ ମାଂସ କୁକୁଡା ଗାଡିରେ ମାତାଲ ହେଇକି ଉଠୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ପାଠାଗାରର ଆବଶ୍ୟକ କଣ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଓଡିଶାର ଆଗାମୀ ପିଢିକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ, ସଭ୍ୟ, ସୁଶିକ୍ଷିତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପାଠାଗାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତେଜିଆନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ କରନ୍ତୁନି, ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ କରନ୍ତୁ ଯାହା ହାତରେ ଚାବିଟି ଅଛି, ଯିଏ
चाकू आ काकुड़ी धरी बसी ताकू प्रश्न पचारंतु आज्ञा फल बिकिबा लोक को पचारंतुनी आमे प्रयास करूछु आम सहित आपण मान जोग दैछंती आपण मान को धन्यवाद चलंतु समस्ते मिलीमिशी ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम फेसबुक जेतिकी संवाद पत्र जेतिकी सरबराह संस्था सबुठी भाषा साहित्य संस्कृति ऐतिह्य ए सबु को जदि हमको आगे नेबाक हबो पाठागारटी आवश्यक एतिकी कहिबी आज आलोचना को इठी रखिबी वर्तमान मो अजय भाई कहि नमस्कार थैंक यू प्रशांत जो आलोचना प्रशांत करले सीटा समस्ते आमे पार्टिसिपेट करवा दरकार माने मो गोटे जिंस लैक करे देखे एठी पब्लिक डिस्कोर्स हुए कि डिस्कशन हुए कोनोसी गोटे पॉइंट ऊपर पब्लिक फैसिलिटी सर्विस ऊपर आम टीवी रे पाठागार विषय रे किसी चर्चा नहीं कोठी माने मु देखिनी मु तो बहुत समय जाए सो जो मन थॉट लीडर अछंती से माने अटेम्प्ट करंतु विल बी फैसिलिटेटिंग मेनी थिंग्स पब्लिक डिस्कोर्स हो पाठागारटा कहीं की दरकार भुवनेश्वर दरकार कि जाजपुर दरकार कि मालकानगिरी दरकार आपण से डिस्कोर्स टा आरंभ करंतु आमे फैसिलिटेट करिवु से मीटिंग एंड आल्सो विल कनेक्ट यू टू सम ऑफ दिस एडिटर्स आपण किंतु सेटा को मन रखिबे जे यू आर द रियल ड्राइवर्स यू नो दोस पीपल हु आर इन द स्टेट they are the real drivers you know for this thank you and let me just now I would like to invite some of the folks those who are present. Dr. Banambar Sahu, is he there? Yes, sir. Hello. Yes, sir. I'm आज्ञा आपण टिके कहिबे कि आपण होचंती ओडिशा लाइब्रेरी एकेडमी रो प्रेसिडेंट is that correct? Yes. आज्ञा Namaskar. Namaskar. And first I will be very thankful to Odisha Public Library vision made by the Odisha Society of Media. Because last so many years we are trying to develop the public library system implement in Odisha. We are very much thankful to you. Sir, खाली गोटे कथा कहिबी आपण माने जो चेष्टा करूछथि अमेरिका रे थाई कि जदि आमे माने जदि सेटा हम ओडिसा रे जदि चेष्टा करनते बहुत इजीली हे परंता किंतु वर्तमान जस्ट मो पूर्व जो निशिकांत बाबू कहउतिले opening a library is not a spending, that is a investment, that is 100% true. Prashanta, please mute everybody except the speaker. Then another thing, I mean Odisha Library, I will speak 2 lines on Odisha Library Academy. Odisha Library Academy, firstly I will tell you this is not a association, this is a academy. Academy means in 2015 some young library professionals, we are the library professionals. I am working as the library information officer of ICMR Bhubaneswar, Regional Medical Research Center. That is a very good e-library. And our Odisha Library Academy जो member माने अछंती से माने सब government of India, corporate sector, librarian and faculties of the library and information science. आ ओडिशा रो जो public library आपन कर जो एम हमर एम टिके डिफर करूची कोन आमे कैरी करूचु academic library, research library and public library तीनटा को कैरी करके हमें डील करछु कारण आम भीतर जो माने अछंती किंतु आपण सुनि कि दुखित हेबे जे आम भीतर जो मेंबर माने अछंती पब्लिक लाइब्रेरी रो इनिशिएटिव वेरी लेस सेहि पई आमे किमिति ओडिसा रे गोटे लाइब्रेरी सिस्टम ता एस्टैब्लिश करिवु ता पई आमे 2018 रे गोटे कॉन्फ्रेंस करत ओडिशा लाइब्रेरी एकेडमी गोटे कॉन्फ्रेंस करतला जोथरे कि हमर कल्चर सेक्रेटरी हमर मनोरंजन पाणिग्राही के चीफ गेस्ट कर डाकिलु आम गोटे ब्लू प्रिंट करूँ हाउ टू एस्टाब्लिश ब्लू प्रिंट फॉर द एस्टाब्लिश लाइब्रेरी सिस्टम इन द स्टेट ता माने पब्लिक लाइब्रेरी एकेडमिक लाइब्रेरी कहीं डिस्पारिटी है आमर लाइब्रेरी मान को वेटेज कहीं दि जाऊ लाइब्रेरियन मान को वेटेज स्टेट गवर्नमेंट रे दि जाऊ ना कहीं से सर्विसेस ठीक ना सर्विस ठीक ना माने टेक्नोलॉजी दे आर नॉट अडॉप्टिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किंबा कॉर्पोरेट सेक्टर जो लाइब्रेरी अच्छी दे हैव द RFID एंड ई रिसोर्सेस एंड इंटरनेट एवरीथिंग फैसिलिटी किंतु आपण गोटे कॉलेज लाइब्रेरी की गला बेलू देखिए जे कॉलेज रे लाइब्रेरियन बसीची बही अच्छी ता सिस्टमेटिक ना किसी सर्विस पाउना जहाँफल कि आमर जो ब्यूरोक्राट है कि जो अथॉरिटी माने से माने चाहूचंती ए लाइब्रेरी किसी इंपोर्टेंस नाही से माने ताकू
सबमिसिव करिया पई आमे जो एकेडमिक फॉर्मेस करी हमर ये मेन एम हैला हमर ताकू आमे मैन पावर ट्रेंड मैन पावर करिवु जो माने लाइब्रेरियन माने अछंती प्रोफेशनल माने अछंती ताकू आमे कोन करिवु ना ता टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिवु आमे सब ई वर्कशॉप ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कलु लास्ट ड्यूरिंग कोविड आल्सो आमे ओडिशा लाइब्रेरी एकेडमी सीरीज ऑफ वेबिनार आरंभ करतला कोन पई ये जो प्रोफेशन को करिया पई प्रोफेशन को डेवलप करिया पई किंतु आपनकर जो चिंताधारा पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट ओडिशा को आनिबा इट इज वेरी डिफिकल्ट काहे की कहूची मु जस्ट आपनको मीटिंग मु मु जस्ट संध्या 6टा बेले मु हमर जो स्टेट लाइब्रेरी जो डेप्यूटी डायरेक्टर जो डेप्यूटी डायरेक्टर लाइब्रेरी संतोष चाटर्जी से मो क्लासमेट संतोष को फोन कली संतोष हमर आज गोटा अच्छी लाइब्रेरी ओडिशा पब्लिक लाइब्रेरी विजन रो अच्छी गोटा वेबिनार होची हमर छोटा डिस्कशन अच्छे तू जानिछु तू मुते लिंक टा पठो तू जॉइन कर रजिस्ट्रेशन कर जॉइन करिवो डिस्कशन करे पागल हेलु ना कोन कहला मु एके अजी भंजर कला मंडप रे मु अच्छी गोटा प्रोग्राम चलची मु अब तो जॉइन कर परिबिनी किंतु तू सेटा भूली जा मु कोन कहला मु जणे अछि डेप्यूटी डायरेक्टर मोर गोटे पियन जदी डेप्यूटी लाइब्रेरी मु कहले कोन डायरेक्टर ऑफ लाइब्रेरी जे क्रिएट हबो कहला से पेपर रे क्रिएट हबो बियन डायरेक्टर ऑफ लाइब्रेरी जो क्रिएट हबो स्टेट पेपर रे क्रिएट हबो से माने रिक्रूटमेंट देबेनी स्टेट लाइब्रेरी अवस्था तो देखुछु तोर संग माने सब हमर संग माने सब अछंती सब रिटायर्ड करछंती पोस्ट फिल अप होनी डायरेक्टर ऑफ लाइब्रेरी पोस्ट लास्ट 15 इयर्स ला फांका ही पड़ची जणे नॉन प्रोफेशनल रहइबो डायरेक्टर रहइबो मु सेटा कोन करा कहला किछि करि होबनी मु कहली ओडिशा लाइब्रेरी हमर जो ओडिशा सोसाइटी ऑफ अमेरिका जो ट्राई करथन कहला से माने ट्राई करथन से माने अछंती से माने सेठी रहिला एठी कर दूर पहाड़ सुंदर किंतु एक्चुअली करिबो जदी इच्छा शक्ति हबो हम जदी लागिबा आपण वर्त जस्ट डिस्कशन करतले जो कहउतले जस्ट मो पूर्वरु कहउतले संदीप सर कहउतले ओडिशा पब्लिक लाइब्रेरी आम ओडिशा रे प्राय जदी पंचायत को जिबे सबुआडे पब्लिक लाइब्रेरी थिला आगे क्लब थिला पब्लिक लाइब्रेरी नथला क्लब थिला से क्लब आगे भागवत टुंगरु क्लब आसिला किंतु वर्तमान मु कहूची हमरी गाँ रे हम केंद्रापड़ा रे हमरी निज गाँ रे गोटे लेखे मु एबे जाई गला बेलू देखा जो पाठागार मु से चेयरमैन को पथन पाठागार ता जाऊ भल हला कराबो आमे जो क्लब करथुलु आमे पढुतला बेले से क्लब टा को चेंज करी पाठागार करछंती पाठागार लेखा है ता भितरे किछि नाही पिला संध्या बेले सेठी ताश खेल हुए मदभत पियंती सिचुएशन माने जदी रियल सिचुएशन जिबे तापर आ गुडा कथा बुझ हम आपण ओरिड अछंती आमे ओरिड होछु पब्लिक लाइब्रेरी करिवे किंतु लाइब्रेरी की जीवो के लाइब्रेरी पढिबो के वर्तमान जो टेक्नोलॉजी डेवलप कलानी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मु कहूची मु रिसर्च मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमर डीजीबी कहउछंती वर्तमान लाइब्रेरी टा को स्क्वीज करा जाउची काहे कि ना समस्त नाउ लाइब्रेरी विल रीच टू योर डेस्कटॉप एंड मोबाइल आउ लाइब्रेरी रो ई रिसोर्स आसी गलानी आउ लाइब्रेरी रो फिजिकल लाइब्रेरी रो आवश्यकता नाही माने वर्तमान रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चिंता कलानी सब माने कलानी से माने स्क्वीज कर सैलेनी ऑलमोस्ट ऑल किंतु आमे किंतु पब्लिक लाइब्रेरी आपण जो कहउचंती सेटा निश्चित स्वागत योग्य किंतु ताको किंतु गवर्नमेंट रो इच्छा शक्ति रो अभाव कारण कोन से माने एटा वोट बैंक पॉलिटिक्स चलची कारण ताको हाथ रे वोट नाही कारण जो लाइब्रेरी जो माने करी जो माने लाइब्रेरियन पढिया को जिबे से माने हो पाठ पढिया पय जानती गां रे जो माने पाठ पढते आपण जदी रियल स्टडी करिवे 90 परठारु सिमिति सब्सटेंशियल डेवलपमेंट रूरल ले हेनी माने एजुकेशन रे जो माने टिके पढुछन से माने आसिले भुवनेश्वर को पळे आसिले जदु लाइब्रेरी की गले कि कोन से माने कंसंट्रेट करले किंतु गां रे के शिक्षित पिला रहउ नांती गां रे आ गां रे जो माने रहउछन लाइब्रेरी जदी हमें पब्लिक लाइब्रेरी करबा ताकोटा मिशन मोड रे करिवे हेई पारे किंतु मु एति के आपन को कमिटमेंट करूची ओडिशा लाइब्रेरी एकेडमी आपन को पकु निश्चिंत सहयोग करबो हम कोन करिया पड़िबो गोटे ब्लूप्रिंट प्लान करबा तापे वी विल कोऑपरेट ऑल द वे thank you very much for your very thoughtful comments and also very keen observation कोटा हे परिबो कोट I think संतोष जी डेप्यूटी डायरेक्टर अछंती से जो हरकृष्ण महताब लाइब्रेरी ना हां मु जस्ट संध्याळे कथा आइतली I have talked to him yes okay thank you the second person I would invite from the library association Samarendra Dikit is he there Samarendra Dikit no okay I just want to invite our president-elect Leena Mishra. Are you there, Leena? Has Leena joined?
No. Let Maybe me check. No, bhai, no. This one. she's not there. Okay. No. Then is a librarian Niranjan Mahapatra there? हाँ भाई ना अछंती. Hello. Yes. Hello, sir. Yes. Could you speak your thoughts on the discussion so far and how we can carry on this movement? समस्त नमस्कार. ये जो मंच ओडिशा सोसाइटी ऑफ अमेरिका द्वारा जो पब्लिक लाइब्रेरी ओडिशा पब्लिक लाइब्रेरी विजन 2024 प्रथम तो मुझे धन्यवाद देवी सुदूर अमेरिका थाई जो प्रयास करुछंती ओडिशार सुदूर दूर रही से ओडिशार चिंता करुछंती बारंबार विभिन्न मीटिंग रे गोटे जिन कही तो तेणुक निजर इंट्रोडक्शन बेसी देविनी मु केवल गोटे लाइन कहबी पाठागार भितर अतिवाहित जार जीवन पाठागार जार मन मो प्रोफेशन हला मु जने लाइब्रेरियन मो ना निरंजन महापात्र. सो विगत किछि दिन हला ओडिसा रे धीरे धीरे गोटे चिंगारी आसुची जोटा कि पाठागार को नहीं ओडिसा रे पाठागार बा ग्रंथागार बा ग्रंथालय जहाँ भी कहवा एवं लाइब्रेरी एवं लाइब्रेरियन मान असुविधा को लेकिन किछि छुआ माने किछि सोशल मीडिया कैंपेन आरंभ करछंती. प्रथम तो मु गोटे जिनस कहबी जोटा कि हेला आमे जदि गोटे गछ लगौचे तार फल आमे खाइबा बोली किछि ग्यारंटी नहीं हम नेक्स्ट जनरेशन खाइ आमे जदि घर करूचे घर तोलुचे आमे बुढ़ा हे जिबा हम छुआ माने भोग करिवे धन अर्जन करबा छुआ माने भोग करिवे सेमिति आमे जो आउ गोटे भी एक सेकेंड जिनस कहबी दीटा को मैच करेबी जदि गोटे लोक बहुत कष्ट परिश्रम करके अक्लांत परिश्रम के आज गोटे शीर्ष में पहुंची रिक्शा टाणी टाणी सी गोटे बड़ मनीष होइछि से चाहिए ता छुआ भी रिक्शा टाणु से चाहिए ता छुआ पाठशाठ पढ़ी बड़ मनीष ये दीटा कहबार अर्थ है जो स्ट्रगल आमे माने करिछे आमे जो पाठागार के अभाव रे आमे एठी सेठी पढ़ी की आमे बड़ होइछे बा कोनोसी उच्च जगह रे पहुंचीचे आमे चाहिए जे हमर नेक्स्ट जनरेशन से असुविधा भोग करो सुदूर अमेरिका थाई जो आमर ओडिशार भाई भौणी माने जो प्रयास करुछंती सेमानक छुआ त आसिक ओडिशार पाठागार पढ़िबेनी ना किंतु सेमानकर मुंड कोन पय बिंदुची सेमाने चाहुंती आम ओडिशा भाई भौणी माने केमिति असुविधा न होंतु सेबारे तांको पिला दिन कथा भी मने पडुथबो जे आमे केते स्ट्रगल रे पाठ पढुथुलु बिना लाइब्रेरी रे तेणु करी सेमाने चाहुं जे मो ओडिशा भाई भौणी माने से असुविधा सम्मुखीन करंतु नाही. तेणु करी ये जो पाठागार किसी समय पूर्व भी आम बड़ भाई कहते जे पाठागार आदिम जुगर भी अच्छी आगुरी मंदिर रोला बड़ बड़ लोक पाखे रोला कि घरे पर्सनाल लाइब्रेरी रोला कि राजा पाखे रोला तापर धीरे धीरे से पाठागार को पब्लिक करागला सामूहिक पाठागार है से भागवत टुंगी पाठागार वही ग्रंथ रोला समस्त जाकि पढ़ुले सी भी गोटे प्रकार पाठागार. तो किछि दिन पूर्व आम देखा आम गाँ गले छुआ मैंने बेसी पाठ पढ़ुले कि पाठ पढ़ला दादन खटिया कोटी बाहर पड़े जमी बाड़ी चषा मूलिया लोक जमी बाड़ी खटुले बापा कहते ना रे पुत पाठ पढ़ेनि कि आजिका डेट्रे आम से निज आम गाँ माटिक देखा आम गाँव में हजार माने शह पिला सरकारी चाकरी करुँच पिला भी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन होती किए सिविल सर्विस प्रिपरेशन हो तो किए एसएससी प्रिपरेशन किए रेलवे प्रिपरेशन होसे माने प्रिपरेशन होगापी जगह पाऊना बड़ भाई किसी समय पूर्व कहते जे आमर खाली बही रखिले यहाँ तो लाइब्रेरी होनी से गोटे इनभायरनमेंट लाइब्रेरी गोटे अलग जिनिस लाइब्रेरी गोटे अलग प्रकार आटमोस्फियर से गोटे जमी आम गोटे जगन्नाथ बड़ मूर्ति आनिकी सुनार गोटे पितल मूर्ति सुनार मूर्ति आनी घर रखी पूजा करते से भाव आसबनी जो भावटा मंदिर अच्छी सेमती पाठागार जो भावटा जो रिडिंग इनभायरनमेंट लाइब्रेरी मिल सेटा आमर घरे मिलबनी आपण को घरे स्टडी रूम अलग थिले लाइब्रेरी पढ़िबार अलग प्रकार क्लाइमेट आसीबो. तेणु करी आमको जिते बड़ बड़ लोक हेले भी बा जिते छोट गरीब लोक हेले भी देखो गरीब लोक पाखे जगह नहीं पढ़िया धनी लोक पाखे जगह अच्छी कि पढ़ार इनभायरनमेंट ना तेणुक सब गुड़ाक सल्यूशन है पाठागार. तेणुक आम सहर कथा छाड़ा आजिकल गोटे ट्रेंड चली किसी दिन है भुवनेश्वर कटक दिल्ली रे भी है ओडिशा कथा कटक भुवनेश्वर कथा कहूँ अलग सिटी भी हो सब पेड लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस आसी जोटा कि आमर किसी समय संदीप सार कहते 200 टंका देकी पाठ पढ़ा
this is very idiot decision like that. Actually जो paid library service आपण विश्वास करिवेनी भुवनेश्वर रे नयापल्ली रे शहीद नगर रे किछि पाठागार अछि पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस जो माने कि रीडिंग स्पेस दउछन्ती एससी नॉन एससी लग्जरी विभिन्न कैटेगरी मासु को 800 टंका रो आरंभ करके 2000 टंका पर्यंत पिला देकी पाठ पढुछन्ती काहे कि ना से माने कोचिंग नवा पई कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रो सिविल हो बैंकिंग हो भुवनेश्वर आसी गोटे पेइंग गेस्ट नै कि घर रही अछन्ती 4-5 जन संग से घर तो पाठ पढि परिबेन ताको लाइब्रेरी दरकार भुवनेश्वर भलिया शहर रे स्टेट लाइब्रेरी की छाडी दिले आउ 2-3टा लाइब्रेरी अछि जोडा कि पब्लिक मान को फैसिलिटी दउछन्ती लिमिटेशन सीट अछि सीट अभाव जो से मान को अलाउ होउनी इवन स्टेट लाइब्रेरी कथा भी कहआ जबो स्टेट लाइब्रेरी भी एबे गोटे रिसेंटली को खबर आस्ता गोटे ओपन रीडिंग स्पेस अछि जे आसला से पढि परिबो आ ता बाद आगु जो थिला तांकर भी किछि लिमिटेशन मेंबरशिप कार्ड होतला से भी बोधे लॉटरी माध्यम रे पढा होतला जे कार हबो तला अन्य पिला माने जिबे कुआडे से माने पढिबे कोठी तो एटा हला आम शहर रो असुविधा गाँ रो असुविधा तो न कहले न सरे कहना गाँ रे तो गोटे जागा पढ़िबा जागा कहना शहर रे तो थिबो भाई आमे गोटे 2 बीएचके घर नेले गोटे घर दे देले हम छुआ पढ़िबा पई गाँ गले तो बहुत असुविधा छुआ माने पढ़िबे परिया पई जागा नै तेनु करी एई जो पब्लिक लाइब्रेरी विषय रे जहा भी मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी ग्राम पंचायत करिया पई गोटे जो चालीची हमरो जो रिक्वेस्ट माने गोटे कैंपेन चलछि एटा सरकार पाखर पहुंची तेनु करी ता पूर्व केमिति पहुंचीबो ता ऊपर मु दीटा लाइन कहिबी एक्चुअली गोटे निरंजन सॉरी आपन को गोटे मिनिट दिया जीवो मानो देयर आर लॉट्स ऑफ आई विल क्लोज विद इन 1 मिनिट एक्चुअली लाइब्रेरी चलिया पई सबटु मेन हला पाठक जोटा कि आम कंज्यूमर गोटे बिजनेस जेमिति कंज्यूमर ग्राहक जेमिति सब भगवान सदृश सेमिति लाइब्रेरी पाठक हेले भगवान सदृश आ पाठक माने सबुठाई अछंती किंतु जेहेतु लाइब्रेरी नाही से माने मन मारिकी बसुछंती जेते बेले हम पाखरे मोबाइल फोन नथिला आमे भी यूज कर नथिला आमे सेही कीपैड फोन यूज करथिले आज हेला कोन यूज करछे तेनो करिया लाइब्रेरी सुविधा हेले पिला माने पाठ पढिया को आसीबे जे पॉइंट लाइब्रेरी नथिबो से माने आसी परिबे नाही तेनु करी मोर गोटे जिंस रहइबो सबटु जो बड़ कमी आज का डेट रे अछि जो जोटा सबटु कम अछि लाइब्रेरी ऊपर सेटा हला लोक मानको जागरूकता लोक माने लाइब्रेरी विषय रे एपर्यंत अवेयरनेस नाहंती ऑलमोस्ट लोग जो माने लाइब्रेरी की जाइछंती पाठ पढिछंती लाइब्रेरी रो महत्व बुझन से माने केवल लाइब्रेरी विषय चर्चा करछंती जो माने जानि नाहंती जे लाइब्रेरी कोन से माने लाइब्रेरी रो इंपोर्टेंस जानि नाहंती गां गळ लोक माने से माने लाइब्रेरी विषय रे जो माने जानि नाहंती से माने डिमांड करू नाहंती जदि आम गाँ को मंत्री जाउछंती आमे कहूचे आगे आम गाँ रो मंदिरटा कर दियो आम गाँ रे पोखरीटे कर दियो आम गाँ रे गोटे खळा कर दियो गोटे खेल पड़िया कर दियो आज पर्यंत कोनसी लोक कहलानी नै कि आम गाँ गोटे लाइब्रेरी कर दियो सेटा हला लोक मानक मधरे चिंगारीटा आनिया पई आमको काम करिया पड़िबो आ आम काम हला जेमिति कि आम हांडी रे भात अछि आमे खाई पारुने गोटे गरीब लोकर हांडी रे भात नै से खाई पारुने दीटा को अलगा जिंस आज्ञा दीटा को अलगा जिंस एथि पई जेमिति कि किछि स्टेट रे पब्लिक लाइब्रेरी ऊपर किछि प्रोविजन ही नाही दे आर नॉट अवेलेबल इन पब्लिक लाइब्रेरी फैसिलिटी किंतु आम स्टेट जोटा कि पूरा ऑल इंडिया भीतर 19टा स्टेट आ यूटी मध्य रे ओडिशा रे 2002 रु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू हे गलानी अथच दीर्घ 21-22 वर्ष पर भी आज पर्यंत तार कार्यकारी हेई पारुनी एटा को कहजिबो आम हांडी रे भात अछि आमे खाई पारुनी एटा को यही कुआ जाय परिबो अथच किछि नाही तेनु करी जदि आमे लोकन को भितरे जागृत करि परिबा नाइ रे भाई आपण को हांडी रे भात अछि आपण मागंतु खाइबा को मिलिबो then public will demand for library एटा मोर गोटे जिंस रहबो आ गोटे पॉइंट म रखिबी जदि हम छुआ माने पाठ पढिया को कोन से एडमिशन करिया को हम जाउछे हम विद्यालय रे कोन देखुछे विद्यालय रे टीचर केते जण अछंती मैथ टीचर के अछंती साइंस टीचर के अछंती प्लेग्राउंड अछि कि नाही स्विमिंग पूल अछि कि नाही बहुत जिंस देखुछे किंतु केते जण पेरेंट जाय कि से विजिटिंग जते जाउ छुआ को आज काल तो छुआ को इंटरव्यू तो पेरेंट को इंटरव्यू हेलानी स्कूल रे एडमिशन करिया को हेले काई ना स्कूल भी चाहूची आमे जो छुआ को एडमिशन नबो ता बापा मा भी एजुकेटेड हेता दरकार तेनु करे हमर भी कर्तव्य आमे ताको स्कूल भी परीखिबा दरकार जे आपन को स्कूल ले लाइब्रेरी अछि कि नाही आपन को स्कूल ले लाइब्रेरी को चलिया पई जने प्रोफेशनल ट्रेंड लाइब्रेरियन अछंती कि नाही से लाइब्रेरियन को क्वालिफिकेशन कोन जानिबा नियति आवश्यक काई ना गोटे लाइब्रेरियन हे गोटे मार्गदर्शक जे कि ताको छुआर भविष्य गढि पारि
आ जदि गोटे सेठी गोटे जने सफल लाइब्रेरियन नथिबो ताले से लाइब्रेरी अवस्था भी दिन शोचनीय होई जिवो आ जेमिति कहिसंती हमर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहिसंती लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो प्रत्येक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी हला हृदय Thank you Niranjan. I think I conclude in one sentence. Then जेमिति गोटे राज्यर शिक्षा व्यवस्था को यदि सुदृढ़ करिया गले ताले से राज्यर पाठागार व्यवस्था को सुदृढ़ करिया गले आ जदि से राज्यर पाठागार व्यवस्था को सुदृढ़ न करबा ताले राज्यर शिक्षा व्यवस्था दिन ना दिन धुलसात हे जबो थैंक यू नमस्कार thank you Niranjan for this excellent observation. I can always vouch for Google can give you 1,000 answers, but a very efficient librarian can bring you the most unique one. It's just like a teacher, you cannot just learn everything from BYJU. So let me just invite Sujit Mahapatra has joined. Sujit there from Bakul Library. I think he was outside, so he could not join. Prasanna Das, Prasanna could join. See, Koripanan Tangro Aspan. Oh, acha. Let me invite Ravindra Mahapatra. Is still there? Yes. Please speak. We only give 2 minutes, because there are so many people are actually Okay. questions. Yeah. Okay. Namaskar. এবং ମୁଁ ଓଷା ର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଗୋଟେ ଭଲ ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡେଭଲପ୍ ହଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆମର ଏଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ଏଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ନାହିଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡୁର 1948 ରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ ପାସ୍ ହେଲା ଆମର ହେଲା 2001 ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା 2016 ରେ आफ्टर 15 ବର୍ଷ ପରେ रूल नोटिफिकेशन ହେଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇପାରୁନି इसे क्वेश्चन ऑफ एटीट्यूड हमर एटीट्यूड नाही कार करबा ପାଇଁ 2019 रे आमे थर जाइथिलु हायर एजुकेशन सेक्रेटरी देखा करथिलु मुटे एडिशनल सेक्रेटरी बसुंत मिश्र को से काम कहिथिले आपण लाइब्रेरी मैनुअल तैयार करंतु कॉलेज लाइब्रेरी मैनुअल आमे तैयारी करथिलु कॉलेज लाइब्रेरी मैनुअल 120 पेज तन लाइब्रेरी टा फंक्शन करिवो हाउ लाइब्रेरी विल कॉलेज लाइब्रेरी विल फंक्शन एवरीथिंग से थिला सबते कि जेतबे आमे सेटा प्रेजेंट कलु सेक्रेटरी कहलु एटा आपन के किछि पैसा खर्च नाही आपन एटा को एक्सेप्ट करिवे गोटे नोटिफिकेशन करिवे से मना कले करिबु ना मु देखंतो एटा सरकार किछि पैसा खर्च नै किंतु एटार सब रूल अछि लाइब्रेरी केमि चलिवो किमिति लाइब्रेरियन काम कोन करिवे बय किमिति किना जीवो जर्नल केमि सब्सक्राइब करा जीवो मीटिंग कर लाइब्रेरी कमिटी के रहिबे सब तो किंतु एडमिनिस्ट्रेटर एटीट्यूड नै से सेक्रेटरी राजी हेले करबा को हमें बहुत कहलु जे देखंतु गोटे मैनुअल टे कले एवरीबॉडी विल बी बेनिफिटेड लाइब्रेरी बेनिफिट हो एडमिनिस्ट्रेटर बेनिफिटेड हेबे स्टूडेंट बेनिफिट हेबे लाइब्रेरियन बेनिफिटेड हेबे से मानिले नै तेणु एटी मूल कथा हला एटी एटीट्यूड नै कार लाइब्रेरी डेवलप करिया पई सेटा आपण कोन केमती हमें केमिति सेटा हेल्प करिया वी हैव टू मो भी सेटा भाबी छी मु कहि मोर सबले कहिबी आपण देखंतु जे कोनसी गोटे प्रोफेशन रो दायित्व हला एसोसिएशन रो लाइब्रेरी इज ए प्रोफेशन जे कोनसी लाइब्रेरी डेवलप हेई छी एसोसिएशन ताकू नै करि छी उत्तर प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट गला एवं सुप्रीम कोर्ट जाई जितला पर से माने यूज स्केल पाइले 5 वर्ष तले ओडिशा कॉलेज लाइब्रेरी एसोसिएशन गोटे केस नै सुप्रीम कोर्ट गला तांग दरमा पे नै एवं जितला परे सब प्राइवेट कॉलेज रो लाइब्रेरी मानक पर दरमा हला जेहेतु जेटा दरमा कथा से माने सुप्रीम कोले किंतु बाकी कथा आ नै छी ओडिशा रो 3टा लाइब्रेरी एसोसिएशन अछि गोटे होची उत्कल लाइब्रेरी एसोसिएशन गोटे ओडिशा कॉलेज लाइब्रेरी एसोसिएशन आ गोटे उत्कल लाइब्रेरी एकेडमी से कहते हम एसोसिएशन नुए तेणु उत्कल लाइब्रेरी एसोसिएशन रो सेक्रेटरी जे से 25 वर्ष ला से पोस्ट रे अछंती किंतु किछि करू नांती
Mhm. ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଉ OCLA ଆଉ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏକାଡେମୀ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ବାରମ୍ବାର ମୋ କଥା ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର କରିବାର ନାହିଁ ଏ ଭିତରେ ପେୟା କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ ଆମେ ସେଟା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କରିବୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଏମାନେ କିଛି ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ କିଛି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ନାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି କରନ୍ତେ କିଛି ଯଦି ସରକାର ଯାଇ କହନ୍ତେ ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତେ ଲେଖନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ସୁଫଳ ମିଳନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ମାନେ ଚାକିରି ନାହିଁ କଲେଜରେ 85% ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ପୋଷ୍ଟ ଭେକାଣ୍ଟ ଅଛି 85% ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାସକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରନ୍ତେ ସେମାନେ ଏଜୁକେସନ କରନ୍ତେ ସେମାନେ ସରକାରକୁ ଯାଆନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତେ ତାହେଲେ ସରକାର ବୁଝନ୍ତେ एक्चुअली पब्लिक लाइब्रेरी कले कौन बेनिफिट होता आ गोटे कथा बेसी कथा कहबी आ गोटे कथा कहबी जे गोटे एथि मु बारंबार कहि आछि गोटे कोर कमिटी हो कोर कमिटी हेले एठी 8-10 जन लोक भुवनेश्वर रु ओसार मेंबर माने तो आसी कर परबे नै गोटे कोर कमिटी मेंबर हेले से बारंबार आमे लेखिबू सपोज डायरेक्टर ऑफ कल्चर को बारंबार जाई देखा करिवू जदि न कले 15 दिन पर आउ देखा करिवू मास पर आउ देखा करिवू सेक्रेटरी देखा करिवू मिनिस्टर देखा करिवू बारंबार कहबू बारंबार कहले इट विल हिट देम कहीं हो नहीं कौन असुविधा कौन अच्छी तेणु आम गोटे फॉर्म करा जाऊ गोटे कोर कमिटी फॉर्म करा जाऊ एवं से कोर कमिटी तो समस्त सदस्य मान एक्टिवली काम करंतु जा फल वी कैन अचीव द गोल आम समस्ते सरकार फंक्शन मान को देखा करके आम मोबिलाइज करंते पब्लिक ओपिनियन Thank you now this is an excellent suggestion we'll Yes. have a core group of people who will Yes. represent, they have to continuously go to the representatives and the administrative officials, to make the case for the library. More mate some senior librarians, retired professors, and also those active librarians. Librarian माने कोई भी निकालो, अपन देखते देखले संतोष चटर्जी कथा, because he is working. यदि सी आसवे एटी he may be questioned. बुझले कि जने लाइब्रेरियन पचारली से कहले तमे काहे कि लेखुछ हम विषय रे हम डायरेक्टर भी विरक्त होउछंदी बुझले कि तेनु से हला तेनु एक्चुअली जम सीनियर लाइब्रेरियंस रिटायर्ड लाइब्रेरियंस प्रोफेसर्स और एक्टिव लाइब्रेरियंस सम इंटेलेक्चुअल्स एमन आसंतु एमन कोर कमिटी होंतु जेमिति ओडिशा पाठागार संघ से माने जाई कि सेक्रेटरी देखा करचंती कहिचंती दुई दिन तक देखा कलानी एवं सेमिटा हेले we can achieve the goal. This is my suggestion. Thank you. Now I want to actually invite some of the eminent guests, those who have been invited. Pranab Babu, apna achanti Pranab Pani? Pranab Babu achanti. Yeah. Once you have spoken, I'm giving 2 minutes. I'm very sorry, but we are running short of time. So 2 minutes to each, and I will invite your friends also, those who have joined. Okay. I would in fact rather request, if you don't mind, to invite these people. Like they've been waiting. In fact, Dr. Atmaram is there. If you could invite him. Let Dr. Atmaram speak now. It's okay. I mean, we know that Atmaram ji, please. Let me briefly introduce yes. before he takes over. Atmaram ji, you are there. In fact, ladies and gentlemen, it's a pleasure. Hello. Ji. My voice is. How come I'm hearing myself? Yeah, I think I can see him partially only. Hello. Can you hear me? Yes, I can hear you. Namaskar, Atmaram ji. In fact, a brief introduction of a very eminent, highly respectable senior citizen of Bangalore, the owner of the iconic Gangaram chain of bookstores in India and Bangalore and NG Road. He's Sri Atmaram ji. He's the owner of that. He is an eminent publisher. He runs an art gallery, and he's a book lover. He's a cultural, lover, and a very respectable gentleman. In fact, he happens to be from Bangalore, and he has consented to speak something. He was very happy that people from Odisha are trying to establish library. He being a Bangalorean since several decades of his generation here. Atmaram ji, please, over to you. Namaskar.
My sincere request to all of you is to visit libraries. Not many are, not many people frequent bookshops and libraries these days. And the customers who used to visit bookshops with families have come down considerably. The most important thing I would suggest is take your family to the bookshops and libraries to enlighten your kids. Let them feel the books. Let them get the smell of the books. Then only the bookshops also will survive, even the knowledge. When children pick up books of their choice themselves, they take more interest in reading. And when you give them any book to read, they would just put it on the shelf. So it's always sincerely advisable that families should go to the bookshops and libraries more often. Thank you. I have a small question for you, sir. Please. Karnataka is the leading state in library development. It has panchayat level library in every panchayat, almost 6,000. Yes. And they were the leaders during COVID, when the students could not go to the classes. So what is the secret, of this success? Is this only money or the culture or the motivation by the people? What is your reading there? I have been to so many libraries in Bangalore. I think every library is packed with people. Every library, every neighborhood library is got at least 50 people reading magazines or newspapers or books of their interest, which they can't borrow. And when they go back, they borrow a couple of books and go and bring it back after a week. Most of these libraries charge a minimum entry fee for life for 200 rupees. Each neighborhood has a library. And I recently read about a library in Denmark. So I flew to Denmark to see the library in a small city called Aarhus. It's called Aarhus Information Center. Everyone who has the opportunity must visit and learn from them how systematically the books are put back and how systematically books are borrowed. And it's an amazing experience to go visit and learn from them. Thank you. Thank you very much. The question, in fact, I will request what Dr. A.J. Mahanti requested you is, what could be the reason of public libraries being frequented by so many people here in Bangalore, not just in Bangalore, across Karnataka? What could be the reason? Why? Every new book is bought by the libraries. That's more important. The library should stock the recent books, latest books, and they should have a small corner where book reading happens once in 3 days, 4 days. The authors should be able to spare time and come read their books to people, read their poetry books to people, not just buy and stack them. And, especially expensive books should be bought by libraries, because independently, every family can't buy expensive books. Libraries will definitely love to, can afford to buy expensive books. Absolutely. Absolutely. Thank you. Thank you very much for your deep insight into this. And actually, I learned quite a bit of information even within this 3 minutes or so. Thank you. May we invite others, Pranab, Lakshman Panda? Dr. Rajesh Purohit, please. Rajesh Purohit. Okay, Rajesh Purohit. Rajesh is there. Hello. Barampur, right? Yes. Is Rajesh Babu there? Yes. Am I audible to all of you? Yes, yes. Rajesh Babu, namaskar. Mu apan kotha bahut sunichi se museum. You were the curator of the museum. Yeah. Yeah, former director of Allahabad National and Museum Calcutta Museum, right? Calcutta National Museum. He is a very famous, even author, writer, and globally been highly recognized for his contribution as a curator of libraries in India. Over Thank to you, Pranab. Thank you, everybody. I must congratulate Ajay Mahanti sir
the people of Odisha will always be indebted to you for your We endeavor. have a which you team have of people. We just here, there is a library committee. Yes, the leadership matters, sir, and that's why we always address the leaders. And thanks to your team. And I have been listening, right? If you notice, I was the first person to register today. Yes, yes. Yes. I have spent a lot of time in different states of India. Unfortunately, I could not have any career in Odisha. I worked in Haryana, then in Allahabad, then West Bengal, Calcutta, and eventually last month only I retired. I'm here in Puri now. And without taking much of your time, I would specifically tell something which all of us should do if at all we are interested to gear off this movement, both at your level in America as well as in Odisha. Especially mu ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲି ଓଡ଼ିଶାର ବିଷୟରେ ହତୋତ୍ସାହ ହବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଏଇ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, it is inevitable and it is expected. So ଏଇଟା କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଜିନିଷ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ ଫ୍ରେମ୍ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ନେଇକି ଆପଣ ଯିବେ ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରପରଲି ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଏଟାକୁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ first of all I must tell you that ଆପଣ जो एजेंडा रे अछि, if you see your agenda, internet enabled library mod, one is internet enabled and the second one is modernized and the third one is public library. Here the most important two words are the public. The protagonist here is the public library. Then this ought to be modernized, and of course as a digital service, which internet and other things are, especially when India is now is one of the top front-ranking leaders in digital movement and all that. And this is an opportunity to initiate the movement in Odisha, especially when you interact with the central leadership as well as the leadership in Odisha at a higher level. I don't say that the librarians or the people or the community can do anything, because my own experience is that if you want to get anything, unless from the top anything percolates, nothing is achieved in India, at least. Here any public movement has not achieved anything. Everything came from the top only. Be it digitization in India, be it reforms or modernization or revamping, everything you see, that what we have been seeing for the last 100 years or 75 years, it has percolated from the top only. So at the top level leadership, if they are interested, especially when you have taken a time framework 2024,
I think it's quite less as far as the time factor is concerned. But it is an opportune moment because 2024 and pre-2024 is an important date-wise, a very important thing in India, especially keeping in view of the forthcoming elections. I'm pretty sure our central leadership will definitely appreciate, because it is connected with education and the modern education which the government of India has introduced, and the state government which is equally interested to start a movement in education in Odisha. We can have, and we especially when we have center and state good relationship here in Odisha, we can achieve this movement successfully. But prior to that, we will have to have certain important things which, unless we program it properly, chart it out properly, make a synopsis of it properly, we are just beating around the bush only, nothing else than that. And to have that, we will have to have a blueprint, synopsis with a proper blueprint. And this blueprint, since the time factor is quite less, we'll have to follow a system called SMART, S-M-A-R-T. We should be specific. S stands for specific. M stands for, measurable, within how many time limit you can measure it out. And A stands for achievable. If it is achievable, then we should not think a very big thing that we will make 450 public schools within a year or within less than a year. And we should be realistic. R stands for realistic. And the final word is T, is time bound. So you decide that what we should focus on primarily to achieve at least 20-25% of our the entire goal that we have, not the entire goal. And the movement will follow and people will join successfully. And once you get a successful result, the people will, the community will join and they will join. The second important thing, you need to have a refurbishment of the library people who are engaged in India. I have a lot of experience across the country, I'm telling you. Please bear with me. People are not interested in bringing audience or readers to their library, be it whatever public or government or non-government or any kind of, because they don't mind whether people are coming or not, but if their salary is given, they are happy with that. There is no activities in libraries. There is no storytelling. There is no program. There is no event. But if you go to any of the libraries in European or American or any other states, there's a lot of activity. And be it a small library or a big library, you have to engage with the community. If the community is not engaged, it is a futile exercise just to have some books, and we are forcibly bringing people or providing Wi-Fi facilities to them, and they are using for some other purpose, not for reading and all that. And one should realize why the people should go to a library. In a public library, why the people should visit, what it offers them. Forget about the utopian ideas that it will eradicate
poverty, it will give education to all. And these are jargon words that is not. How library are beneficial for the students. If somebody is preparing for civil services, it is a heaven for them. It is the most important tool for them. They will get an Wi-Fi. Nowadays, the people are aspiring to become civil services. The children are in. Then the children who are pursuing degrees and I must tell you, the doctors, engineers, whatever profession they have, these e-libraries, this internet facilities library, these modernized libraries are offering everything to them. And regarding the smaller library in the panchayat level, of course, with the help of the community, and the most important thing that we have lots of corporate sector here. There is a CSR funding facilities in India. And if you go for government assistance, the government will give, and the CSR funding, the corporate sector are ready to give a small amount to these public libraries, where at the panchayat level, some of the libraries can. We should not talk about the public libraries in the cities, because the cities people are engaged with something else. They are not interested in, reading, or I wonder why at a panchayat level program, Berhampur, which is a city where you have a model library. If Berhampur is having it is not a fantastic thing that we have achieved. Berhampur is a city, but if one of the blocks or a small village in having a library, then I would say that's something we have achieved. But we need to have a task force, a core group, which will monitor all these things, and they will initiate all these programs, blueprints and all that. And eventually, at least as I told you, that कुछ हद तक तो हम पहुंच सकते हैं. और thank you very much always for your kind comments and excellent suggestions. Actually, it's a wonderful thing for me to interact with you now, and for everybody. You can see in the chat box how many comments are pouring in right now. With that, actually, there are some more people who are waiting, to speak. Professor Dr. Chittaranjan Das from Pune University. Chittaranjan Das? Yeah, Professor C.R. Das from Pune University. Is he there? Yeah, I'm here. He's there. Yeah, can you please, give your thoughts and comments in 2 minutes, please, because we are running out of time. I know I thought I would not speak today, but since Pranav has persuaded me, I'll speak a few words. Having attended this meeting, thank you very much for invitation. I have learned a lot from all of the speakers about the library and its expansion, goals, objectives, and all that. I'll just in a couple of minutes share my thought about it. Sir, I'm located in Pune, and I know the robust demand for library, for civil services and competitive examinations in Pune city today. And there are migrations, huge migrations from villages to cities these days for civil services preparations and other related competitive examinations at the national and the state levels. Therefore, library and the reading hall demands have increased considerably in the last few years. And this is not true of Pune only, this is true of all cities across the country. Therefore, it would be necessary, it would be required that the governments and other agencies make efforts to expand this or provide these library facilities so that many youngsters, aspiring youngsters would be benefited. This is one. But I will go to a very fundamental level of raising an issue. One is whether
I mean, this is what comes from my experience at Pune University. During the pandemic, we experimented with a digital library with remote access facilities and all that. But I found that there are very few readers of digital books. We had to, next year after the pandemic was over, we stopped all that. We had bought books for 2-3 years duration and all that. We did not renew them. On the contrary, we went for hard copies, the real books. And then we found that readers increased of these books. Therefore, digital library would not be a substitute, but a complement for any library. This is my experience. And I said I would go to a very fundamental level of raising an issue. I come from a village. I come from a village called Athantar near Balipatna. It's about 50-60 kilometers from Bhubaneswar, where I grew up in an atmosphere where it's not intellectual, it was not intellectually charged. If I go today, materially everything has developed, but intellectually it has remained stagnant. We are two types of people in the schools. One was those who wanted to read books, advance knowledge, have competition among us. We used to have quiz, we used to have debate and things like that. There are other people who are not just interested. They're not persuaded to read. Therefore, I would say that reading requires an aspiration, a culture. Probably Karnataka has established that kind of a culture, and people would be in that culture persuaded to read, whether you want them to read or not. They would always be there. They would read at station, they would read in the airport, they would read in schools and colleges everywhere. And therefore, you have that kind of expansion of library reading facilities almost everywhere, including airports. But the point is, who would be our target people? And I mean, one of the speakers indicated this. Who would be our target reading people? I would suggest that let us look at children, school-going children, as our target. Every intellectual movement, historically speaking, has associated movement with a reading literacy of activities. And that is, whether it is Indian national movement or any other movement, library has always served a considerable purpose, a great purpose in serving society, increasing literacy, increasing imagination, interaction, arguments, so on and so forth. Reading is a great habit, from my own personal experience. And you interact with an absent, author through the imaginations that you don't have, but you interact with that. If you have library associated with a school, I am suggesting a school, and along with school, a block or a village library provided by the government funding or any other agency, industry funding or whatever, this would be of great help. But fundamentally, each school must have a good library. Every child must visit the library. Having a space for reading within the school along with the library would be of great help. Having library, good library, the children visiting every day would by itself a visual interaction between the children and the library books available with them. I mean, I have a personal library of 3,000 books in my own house, where I look at the books, I interact, I get persuaded to read some of them. Some of the titles persuade me to read, go through at least the introduction, if not the entire book. Schools must create their own libraries, whether government funding or local funding or any other funding. Schools must have their own library. I mean, if local funding is available, the people of that area are persuaded to contribute something from their income. It would be a great idea, because they are stakeholders of that kind of library, and they would persuade their own children to go. I mean, this is what is my limited point. To really conclude, I would suggest that villages must be revisited. Their requirements must be noted. And there are people who are now getting diverted from
reading towards internet and other activity. Everybody, I would not suggest children don't, villages don't have these days internet. Everyone has internet, and if they have good robust package. Netflix is available to almost people buy Netflix. Okay, they would always be able to read books online, read books, digital copies also if they are interested. But having a library and a space for reading hall, reading. Thank you very much, Thank you, sir. Chittaranjan Babu, for your comments and suggestions. We have actually, yeah, thank you very much. Indeed, I mean, I don't know when you joined. In my own school, the World Students Association, we are giving scholarship in terms of books, not cash, because the cash is spent by cash is spent by the parents. So we decided 10 years ago that we'll only give books, 3 books to each first, second, third student. 8 classes, they will get 24 books. They will share among themselves, read, and teachers will, actually take some quizzes, give some quizzes so that they know that they have read. So these are the things that I have in my own school. So these reading habits are very important. Now I want to actually invite some of the folks. Is Miss Bedarata Das there? Bedarata? Hello? Dr. Devrata Das. Dr. Bedarata Das? No. Mr. Aptakam Misra? These are volunteers, those who have actually given their comments and suggestions. Yes, I am there. Yeah, he's there. Sorry? Hello? Are you Bedarata Das from Gita Library? Yes, sir. Yeah, please go ahead and make your suggestions and comments if you have point out any action items. I know you have given, a brilliant set of data to us about your library. Yes, sir. Sir, I like to, sir, thank you so much for giving me this opportunity. Sir, mu gote katha kaya ko chahuchi ki amaro library system re ame samaste kohuche ki kon kariba, but practical field re mu nije karuchi se kamo udako. Jemiti moro suggestion rahichi ame 3टा categories kariya padiyo group ku. Gote category re rahibe amaro senior persons, those are our advisors. And semanakara jo manakara achi ko mana sangre connection jo mane higher priority level re rojan emti konosi ministers ho ki amaro konosi IS level secretaries ho, jodi they are connected with them to tankara reference ta semanake deba amuku. They are our strategy maker. Second group rahibo je practically jai ki minister secretary manku dekha karibo, jo mane ki amaro gote active librarian group jo manakara e ame tikke senior level achu सेमाने हमें जीवु डायरेक्टली सेक्रेटरी आउ मिनिस्टर को देखा करी हबो. एंड सेक्रेटरी मिनिस्टर माने हमको टाइम दउचंदी सर, एमति नाही कि साने टाइम दउ नांती आ सेमाने कोरी भी करूचंदी कि आपण माने कोडी अछंदी एते काई कि एते माने बहुत गैप रे काई कि आसुची जिंस ओडाको सेमान चाहउचंदी कि एवरी मंथ रे एटलीस्ट 3-4टा फॉलो अप हेबा दरकार. आ थर्ड ग्रुप होची हमर यंग जनरेशन. हमें एवरी कम्युनिटी हमें गां रे गोटे माने प्ले करिबा जेमति हमर कोर्स लाइब्रेरी रो कोन फैसिलिटी हेई पारुची, लाइब्रेरी टा कोन, लाइब्रेरी गले कोन लाभ होबो. हमें जदी प्रत्येक गां रे रोड शो करि पारुचे आ सा पे हमर जो एसोसिएशन मेंबर माने अछंती सेही टीम रो जो यंग जनरेशन नै कि जदी हमें करि पारुचे ताले हम लाइब्रेरी टा डेवलप हेई परिबो. हमें किंतु प्रैक्टिकली कहा गले सर मु निजे तडे लोकन को डाकुची कि मो संगे जिबा पयका हमें केवल 5 जण एबे काम करछु सेतरे जो माने कि प्रैक्टिकली जाउछु आ लोगों को देखा करूछु, मिनिस्टर को देखा करिछु आ सेक्रेटरी को देखा करूछु, चीफ सेक्रेटरी को मु प्रैक्टिकली हम देखा करूछु केवल 5 जण. फोन कले कोन हमर यंग पिला भी फोन कले कहउचंदी एबे जाई परिबोनी मोर एठी अछि, मोर एही प्रॉब्लम अछि. बट जेतर साने स्पीच दउचंदी, भाषण दउचंदी, कहउचंदी कि हां हमें कर दबा एटा हबा दरकार, सेटा हबा दरकार तो सबु किंतु प्रैक्टिकली हमें काम करिया दरकार. तो मोर गोटे रिक्वेस्ट होची कि हमें 3टा ग्रुप का आपण करंतु ए एसोसिएशन भीतर जे मन अछंती गोटे गूगल डॉक्यूमेंट क्रिएट करिबा एवं गूगल डॉक रे हमें सेमान को रिक्वेस्ट पठेबा कि को माने हेबा को चाहुचो माने हमर जाई कि रोड शो करिया पेंका हमें एजिटेशन करबा परे आगो रोड शो करी कि हमर गां गुडा करे हम लोक मन को एक्टिव करे दरकार कि लाइब्रेरी रो यूज ता कोन
पूरा ओडिया रे छोट छोट ड्रामा करिकी लाइब्रेरी भितर केमिति कोन कले लाइब्रेरी दरकार हम पिला मानन पइका सेटा यंग जनरेशन ग्रुप द आ मझी ग्रुप रहला जो माने हमर ए 50 45 50 प्लस जो माने अछु कि हमर जो माने 40 34 40 अछन जो माने लीडर टाइप रचंती आमे किछि मिसिबु जो माने कि आमे जीवु समस्त पाखकु आउ बड़ माने जो रहले सीनियर लोक जेमते आपण माने अछंती सेमान को ड्राफ्टिंग हमको दरकार गोटे स्ट्रांग ड्राफ्ट को आमे नै कि आमे प्रोजेक्ट कर परु तांका आगे कि सर देखो या हेची टू द पॉइंट एनेक्सर वाइज पेज वाइज आमे देई कि जिबा जेमते आमे चीफ सेक्रेटरी को ऑलरेडी मु पर्सनली प्रदीप एंड आउ गोटे सुनील बोली गोटे पिला अछि आमे सब जाई कि आउ दुई जण अछन जोगेश्वर महाराणा और झियो अछि सुजाता आमे पांच जण जाई कि प्रैक्टिकली चीफ सेक्रेटरी को देखा करलु होल डे सारा में टाइम स्पेंड करलु से सेक्रेटरीट भितरे तांको देखा करिया पैका पूरा सकाळ 10 रु संध्या 5 रे हम तांको देखा पाइलु एवं से हमर ईच एंड एवरी कथा को सुनिले अन्य मन को 2 मिनिट रे बाहर कर दोतले किंतु हमको ठिया करी सुनिले एवं ताको हमें कोन करथु ड्राफ्टिंग एमिति करथलु कि गोटे जिंस नोट देइछु ता अगेंस्ट डॉक्यूमेंट देइछु एनेक्स 1 करिकी एवरीथिंग वा गिवन एंड शाम को हमें तांको घर को जाई कि देखा कलु से हमको रेकमेंड करले रिकॉग्नाइज करले कहले कि आई विल ट्राई माय बेस्ट तो से कहया कथा कि हमें फॉलो अप करिवु किंतु हमको फॉलो अप करबा हम संगे जो 10टा पिला जिबा दरकार सेमान तो निजे आसु नांती ए ग्रुप रे भी अछंती जो माने कहबे कि हमें जाई परिउ नेते सकाळु हमें एते बाटो जाई परिउ I actually requested core volunteers who will be committed and will take action on I am this. the first person to कहती हूं core volunteer है बोली Yes, that's why I've been looking for you. Where are you? Okay, so I'm so glad that अबिका करि दोंतु मु गोटे यंग ग्रुप को करि दोउची जो माने जाई कि गां गां हमें जिबु sure weekend हो मंथ एंड हो जेटा गारे करबे ड्रामा that's what we want actually from the folks, ताले the पिला माने मोर grassroots level अट्रैक्टेड organization. जानि पारे लाइब्रेरी होती Yes, सर मु निजे करिछि लाइब्रेरी रे मो लाइब्रेरी 180 पिला आसुचंती आमे तांको बेस्ट यूजर प्राइज दोउछु तांका पय कि आमे करिछु एडुटेनमेंट प्रोग्राम जोथरे कि समान चेस खेलुचंती समान इंजीनियरिंग लैंग्वेज रो डम्स अराउंड करा होउची तांको गोटे दिन लाइब्रेरियन बना होउची कि तमे लाइब्रेरियन बनी कि देखो कोन प्रॉब्लम अछि आम साइड रो आ तमे कोन फैसिलिटी देई पर स्टूडेंट को आ कॉलेज को ऑलरेडी सजेशन देइछु कि गोटे गां रे जेतो हम लाइब्रेरीटा कॉलेजटा तो हमर से मदनपुर गां पे गोटे पब्लिक लाइब्रेरी पे हमको कॉलेज गोटे रूम भी देइछि कि हमें स्टार्ट करू सेठी पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम जो माने देबा को चाहउचंती किछि भी माने हायर में पढिया चाहउचंती ना फ्री सर्विस दबु Okay, thank you very much. Yeah, we need to move on to many other people who are waiting to give their thoughts and questions. Okay, the next person. Hello. Ajay, 1 minute. हमको गुडाई स्पीकर्स सजेस्ट करछंती जे ब्लूप्रिंट कोटा अछि हम जोटा कि गवर्नमेंट को ये करिया जोटा कि हम ओसा पठी थिला ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा को हमको पसंद है अपन शेयर करिया स्लाइड नंबर 7 और 8 हम जोटा प्रपोजल पठी थिले এটা টিকে ম্যাক্সিমাইজ করতে হলে এটা যদি আমি এই যে ব্লুপ্রিন্ট কথা আমরা অলরেডি ডিসকাশন হউতলা I think we have the rule if you follow these things we have higher chance to get success काहे कि गवर्नमेंट सकाळे कहउछंती 5T विषय that giving the big credit they कहउछंती पेरिस परफॉर्म जदी से माने हॉकी स्टेडियम कर दूछंती 1 year भीतर this is something we need to push forward because this is the 2024 election time I think this should be our top agenda while talking to ministers secretaries MLAs collectors whoever because we should not ignore this thing because we may have 1,000 ideas but let us streamline what we need to focus on and we have the library law already approved the circulars have been already sent to the BDOs there is funding there is proven library models central government has issued circulars to establish libraries and they have sent letters to all of the state heads तेणु आमे अपेक्षा न करिया बेसी दरकार नाही
we need to drive whatever assets we have. Kana ame jodi seita kariba am nihati success rate achi. Kana ebe jo 2-3 मास अछि एटा को ame केमति capitalize करि परिबा. ame जदी every 2 weeks जोटा हम देवगत दास कहिले जे हमको 3-4 थक फॉलो अप करिया दरकार गवर्नमेंट को माने जतेले मैं पब्लिक अवेयरनेस बढ़ेबा ता संगे संगे गवर्नमेंट को 4 times कना we have multiple groups, let every group meet the administration. जेतोल जाय गोटे से माने गोटे एक्शन न नै छंती आमे प्रति सप्ताह के प्रति 2 सप्ताह तांको फॉलो अप करिबा काहे ना इलेक्शन समय जदी एटा को आमे हाइलाइट करिबा के चाहिबो ताले इलेक्शन वोट बैंक अफेक्ट होआ पई तेणु एटा को आमे रिफाइन करिबा. Nishikanta, I mean, we are collecting the action items from people. I think you have gone over this proposed action plan. What we are going to do is put all these things in a Google Drive or a repository where people can access, and we'll have a core action item and a core set of volunteers to follow this up. Okay. Otherwise, आमे आज भितरे गोटे प्रति मासरे गोटे जति गोटे मीटिंग रखिबा कि every 2 weeks मीटिंग रखिबा on the progress. In parallel, we have to file RTIs, PILs. Kind of 75 years has been passed. We have given more than enough time. Then, आपने suggest करंतु how we can plan in next 7 days, next 2 weeks, next 3 weeks. Kind of this is a critical time. Kind of एटा का मैं miss किया कथा नहीं. आपने suggest करंतु let us focus on this how we can accomplish. Kind of आमगे assembly केटा किंतु कथा उठा हबो. कारण मु एठो आमेल के कहि कि आमे गुडा एमएलए मिनिस्टर को कांटेक्ट करछु आपण मन को फोन करंतु केना तांको फोन करंतु. there are other people waiting to ask questions, you know this, so sure. We really have to keep on going. Already 2 hours, more than 2 hours. Okay, is Lakshmi Narayan Nanda there? No. Devadatta Panda may have left. So anybody else who has raised, I'm just reading out from the Pranam Babu, you want to say something? Okay, you raised your hand. Thank you so much. Pune, samastan ko gurujan ko pranam, samastan ko sneha shraddha bhara namaskar. It's a pleasure, in fact, learning a lot of things. A very interesting thing has come out, in my opinion, as a keen observer. I'm not a librarian, all right? I'm not an academician in that strict sense. I'm not from any association, either from OSA or OLA or anything. I'm an Odia, Swabhimani Odia, jane pathaka, lekha lekhi to kare. Kitu pathaka hisabre, when I realize what is the root cause of this thing, like I would like to quote this young lady. She is very correctly writing, though she is a librarian by profession. In fact, her last comment is really, summing it all properly, that we are librarians, but not at heart, by profession only. ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ହୃଦୟରୁ ବାହାରିବ ଜିନିଷଟା ସେଇଟାରେ ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରିବ ନା. Problem is market is always driven by demand and supply. ଆପଣଙ୍କର demand ନଥିଲେ supply ହବନି. सरकार कौन करूची, लोक कौन करूचंती, जदि पाठक नाहंती पढ़िबा पई लोक नाहंती, आपण लाइब्रेरी करिवे का? आपण को चेयर रे बसिबे लाइब्रेरी ही कि जदि पढ़िबा पई केही आसुनाहंती, आमे चेष्टा भी किछि करूने ताको आनिया पई. सबु कथा रे आमे डिपेंड करि चलले सरकार ऊपर. सरकार सारी स्टाइल रे करि चलची से व्हाटएवर टी व्हाटएवर एक्रोनिम करि कि समान करूचंती, ताको निजर एजेंडा अछि. मु तो कथा हितली रिसेंटली, I mean regular touch with both more school and more college chairperson sangare, and whenever they request me for my suggestion or anything, I keep doing that. In fact, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଏଟା କହିଥିଲି ଯୋଉଟା ଓଷା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବି ଗୋଟେ ହଉ. ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୋ ପରିବାର କଲେ, ମୋ କଲେଜ କଲେ, ମୋ ସ୍କୁଲ କଲେ, ତା ଭିତରେ ମୋ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର. एमती कौन स्कूल कॉलेज हवा कथा नुह ओडिशा रे जहाँ भितर लाइब्रेरी ना, और लाइब्रेरी इफेक्टिव लाइब्रेरी, मॉडर्न लाइब्रेरी एक्सेसिबल टू एवरीवन विथ सर्टेन एजेंडाज, माने ता भितर विभिन्न एक्शन ओरिएंटेड प्लान हवा कथा.
Librarians also, particularly, like this young lady has written, Smriti Rekha, ki jete interns achanti or young librarians achanti, they should visit the schools and colleges to make them aware about there is something called library. School effort karuni, college effort karuni. Are librarian community to kari paribe. Apankar youngsters, let them go as an intern, do a project in a school or college, propagating, promoting libraries so that tomorrow, you have your audience coming, trooping into your place. Then apankar chair bhi surakhita rahibo. Now, these are fundamental issues. I mean, bahut bada bada katha bhabuche koduche. Kintu jodi if you go deep into that, why ठीक ଅଛି South India रे एठी हला US रे होउची all developed progressive society country रे होउची libraries and all kind of things. Majority of us are pretty much aware of it. But हमें कौन implement करूचे? Hello? Can you hear me? Hello? Yes. हाँ तो मुझे कहूँगी इम्प्लीमेंट करियो को एक्शन एजेंडा एक्शन ओरिएंटेड प्लान हबा कटे डिबेट हमें बहुत करि परिबो व्हाट्सएप ग्रुप रे तो डेली करि चली छे नाउ इफ यू लुक एट इट देयर इज नॉट प्रॉपर यूनिटी इवन अमंग द लाइब्रेरी कम्युनिटी ये कहले से कहले से नाउ प्लीज हाथ जोड़ी के कहू छे अगर मिसी जानते प्रत्येक चिंताधारा अलग रहे समस्त पांच आंगुठी समान नुह प्रत्येक कथार आम एकत्रित हो पारे एमती तो आम ओडिया जाति भर सब बड़ प्रॉब्लम आम एकाठी हो पारे आम यूनिटी ना आम ओडिया जाति रे आम जिते स्वाभिमानी जहाँ भी कहले आम हिसाब से श्रृंखलित नुह तो जिनसटा हूँ जो एजेंडा कराब एत सुंदर रे सुदूर अमेरिका रे बसिकी डू नॉट क्रिटिसाइज वेरी इजी टू पुल डाउन समबडी कि हाँ से अमेरिका रे बसिकी कहते आम ये बस आम जाचु I have heard about this from certain people. Yes, unfortunate. No, I guess empty no one. बहुत किसी समाने करूचंती ओसार जो जिंस गुड़ा करछन एंड पर्टिकुलरली लाइब्रेरी पाई ए जो महान व्यक्ति माने एटी अछंती हमें जो ओसारे जेति जन को देखुची आ के जन आसीबी न पान so many projects they have developed and implemented probably the only प्रवासी ओडिया एसोसिएशन जो मान को मु देखुची या नुह जे हम जेतु बेंगलोर रे मो हला 27 वर्ष इति 27 संस्था हे गला ओडियांकर आम एते एकत्रित होइके अछि जे 27 भाग रे विभाजित होई सारलुनी सब बेले कहते ओसा कथा उठिले समस्त मेंबर होगा पाई राजी आपनकर जूम मीटिंग हले बेंगलोर आपण अधा लोक पाइबे दिल्ली रु पाइबे बॉम्बे रु पाइबे सब आछंती मु जानि छी को माने भी जाउछंती प्रत्येक कथा रे जेते बेले हमर कथा बारे ओसा जदी करि परछ आमे काहे न करि परिबे ना आगे डॉलर्स अछि तांको पाखरे से पैसा फोपाडुछंती एंड देयर आर सम पीपल politically motivated MP position पाई लागिछंती माने लुक एट द नेगेटिव थिंकिंग ऑफ आवर पीपल आमे कोनसी से अप्रिशिएट करिबानी आमे निजे करिबानी जो जे करूची ता गोडो टाणियो को चेष्टा करूची now this is the root cause of all the problem that we the Odia community are faced with so let's put that aside the root cause like I said unless you have a consumer your product no matter how good it could be has got no value हमें एटी रीडर्स कम्युनिटी को क्रिएट करिए को पड़ियो अरे प्रत्येक जिंस रे ह्यूमन बीइंग रो टिपिकल एटीट्यूड कि मुझे क्या मिलेगा फाइंड एन आंसर टू दैट उससे क्या मिलेगा ताकू जे हमें देखै दी पारी भाई तोरो बेनिफिट एई हबो सेठी पई तू लाइब्रेरी जा ताहाले जीवु मो पो भी आजिकली का जनरेशन पिला से कहूची ना व्हाई शुड आई रीड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन माय मोबाइल इंटरनेट में पाई जाउची गूगल करके पाई जाउची व्हाई शुड आई पिक अप न्यूज़पेपर योर बुक he even doesn't care to read my own written book now this is what the generation is afflicted with but we need to understand instead of criticizing them let us understand what is the psyche of the current generation तांकर प्रॉब्लम टा कोन कोथि से माने काहे कि ऑब्जेक्ट करूचंती काहे कि रेजिस्ट करूचंती वी नीड टू ओवरकम इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग फिंगर एट देम अब्यूजिंग देम कंप्लेनिंग अबाउट देम कि ना आजकल पिला माने ये करनांती हमें कहूचे माने जनरेशन गैप हो जाउछ हम भितर ये आजकल के पिला पढिया को चाहुनांती ये होनांती इंटरनेट रे ये नहीं नो इट्स नॉट वी नीड टू कीप पेस विथ देम मार्केट इज ड्रिवन बाय डिमांड इफ द डिमांड इज नॉट देयर if you feel that's good for the community, society, for the country, for the nation, then you need to address that. And that is to create the awareness of the people. What is the benefit to read books? What is the benefit to go to the
this thing. Jadi Jaydev Bhavan Bhubaneswar jadi ete successfully chalichi. Why not that? Could you find out kahinki seti ko loko jauchanti? Not just to while away time or a condition lagichi boli basiki masti karunahanti. ଯାଇଛନ୍ତି ତାର ସ୍ପେସିଫିକ ରିଜନ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପର ଡେମୋଗ୍ରାଫି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି ଆପଣ ପାଇବେ ତା ଭିତରୁ କେତେଟା ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ competitive exam ପାଇଁ preparation କରୁଛନ୍ତି they have the books available over there the research scholars are there they have the books available over there and there are some serious reading mentality people the real readers they are also there so ଯଦି ସେଇ ଟାଇପର ମାହୋଲ ଆମେ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବେ instead of always depending on the government unfortunately ତା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି ସେମାନଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି like I said we will try we should try we can and together we can like I always say but individually why can't we as a community why can't we in our panchayat level ଆମେ ମନ୍ଦିରଟେ କରିପାରୁଛୁ ଆମେ ପାଠାଗାରଟେ କାହିଁ କରିପାରୁନି ଆରେ ପାଠାଗାରଟା ହିଁ ମନ୍ଦିର Thank you Pranab. I mean wonderful suggestions. Namaskar. If I go from my Kotak city to Paradip, there are 12 Sai Mandiras, which cost hundreds, I would say each one of them is like 6-7 crores or more, but building library is not the priority of the public, they go, Just to interrupt you, one thing, I'm sure you all would have experienced like in Bangalore also. ଆମର ଏଠି ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହଉଛି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ହଉଛି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ବି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷ 25 ଲକ୍ଷ ଏଇ ଟାଇପର ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଖୁସିରେ ସୁନ୍ଦରରେ କରିପାରିବା that is it is the attitude. Thank you Pranab Babu. Is anybody else has a question or comments? Can you raise the hand? I can't see it. If I missed anybody, please. Wonderful. I mean, this is fantastic. We had about 37 or 38 or 39, at the maximum. We need volunteers who are dedicated, committed, and they are really anxious to have something done in our state. Every state is different. We cannot compare ourselves with Karnataka. We cannot compare with Maharashtra. But we have heard. I was a student in a small village. So I read Godabarisha Granthabali, Fakirman Granthabali in my own village school library. It's not, I'm very grateful for that. I mean, Randipu Anta story, I read in Fakirman Granthabali. So this is something, we need to look at, how the reading habits can be actually increased in our schools, colleges, and we can be also helping them in some ways. The number of action items actually I have written down. We have recorded the conversation here for only action item purpose and also for people, those who could not attend. And we will definitely get back to you to summarize. There are, main action items are, in this three-pronged approach. And then we will create 4 volunteer teams to take up these action items. One of the things that Nishikanta stressed that we need to go to our political representatives, MLAs, administrative officials to make our case, because unless you go and make your case, they are not going to do anything, and this is how the nature of the things are. And if you go, then this is the right time before the election. I mean, Rajesh Purita actually said, this is the opportune moment, okay? And then we should strike. And if we are united also among all the library associations which were represented here, and we will invite them to next meeting. Actually, we plan to hold this meeting every month so that they can all unite, keep an united front and make their case to the government. In our state, okay, I mean, the public libraries cannot happen just on its own. Just like Pranab Babu said, I think we missed Prasanna Das. He had suggested if we can create 30 model libraries, either in block or panchayat or in this district, which can be emulated, just like Jadav, Bhavan or something like that. That will be a great thing to emulate. In my view, that we cannot aspire, that 5,000 libraries are going to be happening in the next 4 years or so. But we can create 30 libraries, model libraries.
So we have, Prashanta has put, you can go and browse. All the documents are available. What we have done, try to do also in the OPLI library. And Prashanta, you have this is OPLI odishasociety.org. That is the web address. Thank you very much. We have gone over almost 2.5 hours now. And we are very grateful to all of you to come and join in this discussion. And we'll put together a summary of action items for all of you. And we'll follow up with another meeting next month. But in the meantime, we'll work with each and every one of you who have been very kind and very dedicated to come and join this meeting. Thank you very much. Hello. Nishikanta, you want to say something? Dr. Kishore Chandra Satpathy kichi kahiya pai chahuthile? Mu to dekhi parune se mane I don't know, I'm not able to see. No. Thank you. I'm just mane mu sunili because I'm not in the Odisha. I'm in the Calcutta. Mane mu Calcutta re achi. I'm just looking after whatever help that is required. I will always. I'm there to do my own part. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Am ki kichi kahiya pai chahuthile ki mane last minute just kichi input suggestions. Are these the great libraries of the world? What are you putting, Prashant? ताले आपण माने शेयर करंतु जहां भी किछि क्वेश्चंस अछि केना हमें जदियो गोटे मास रे हम मीटिंग हबो ता पूर्व व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप केना we need to follow people at the top level, even at we need to think about how we can bring more awareness to at grassroots level. निशिकांत भाई आमे आज समस्तंकर क्वेश्चनर सब नेइचु समस्तंकर मंतव्य अनुशीलन अनुध्यान जहाँ सब से माने देइथिले मो सब संग्रह करी रखिछि आमे ता ऊपर आमे पुणी थोड़ा आलोचना करिबा आलोचना करी कि म भाबुछि पुणी थरे आमे आउथरे मिसियो पड़ियो समस्ते काइना आज मते भल लागिला जे जदियो 72 जण निजर नाम देथिले 39 जण जोग देथिले किंतु आउरी 2-3 जण आमर सभ्य माने जोग देई पारलेनी जो माने किछ कहिबा चाहुथिले आमे पुणी थरे डाकिबा आपण जेंदी कहिले कि अजय भाई जेंदी कहिले आमे ए जिनिस जणे जे पाठागार करिबा कहा पई पिला दिन जिन पढिथिले गछ लगाइबा कहा पई पाठागार करिबा कहा पई आ पाठागार को लोक आसीबे केमिति आ ऊपरे आमे द्वितीय सभाटा करिबा पुणी समस्त सहित कथबार्ता है कि पुणी थरे एमिति करिबा कहीं बे मु 2 घंटा रु अधिक समय हे गलानी भारत रे वर्तमान राति 10टा हलानी से माने नैश भोजन करिवे कोन करिवे चलन जीवा पुणी थरे Thank you very much. We will convene in 1 month and summarize the meeting. Thank you very much to all of you. बहुत धन्यवाद सर जहाँ गोटे एमती प्रोग्राम आपण फ्रिक्वेंटली करंतु मझरे मझरे गोटे मीटिंग समस्त निजर मतामत रखंतु. Proof will be in the pudding. I mean, we want action. We really want to help our friends, colleagues, students, librarians, but the proof will be in the pudding. सर आमे नुआ नुआ जनरेशन रो पिलांक थारो नुआ जो माने ग्रुप रे ऐड होउन से माने उटा आमे किछि सुनिबा आमे आज किछि शेयर करले से माने किछि शेयर करिवे किछि नुआ आईडिया आसीबो आज किछि भी आईडिया मु जा देखली शेयर करछन जे स्कूल मानन करे गोटे माने पब्लिक फैसिलिटी करिया पे 3 जण लेक्चर दी दैट विल बी गुड आईडिया वी विल डिस्कस इन नेट मीटिंग बिकॉज़ प्रकृत रे यूजर माने आसुछन कि नाही पब्लिक लाइब्रेरी को आसीबे कि नै सेटा गवर्नमेंट प्रथम देखिबा दरकार काना प्रत्येक पंचायत स्कूल अछि ना प्राइवेट स्कूल हमें पुणी थरे मिसिबा हम पुणी थरे मिसिबा सब आपण माने निज जहा सब अनुध्यान अछि मंतव्य अछि सब हमर ग्रुप रे जो ओडिशा लाइब्रेरी नेटवर्क करंतो जीवा पूर्व मु गोटिए कथा समस्त को अनुरोध करिवि ओडिशा लाइब्रेरी नेटवर्क ग्रुप रे कौनसी प्रकार लिंक फोटो वीडियो मंतव्य तर्क वितर्क उडा सब करंतुनी काहे सेरा में पाठागार पे करिसे चलंतु समस्त पाठागार विषय रे करिया काहे ना प्रणव भाई मु निशिकांत भाई आमे खाली ओडा लेखनी पकनी कहि समस्त शत्रु होई सारलुनु तेणु हमको शत्रु भाव पछके आमे नीलकंठ प्रस्तुत अछु मात्र किछि पोस्ट करंतुनी आपण देखंतु जोडा हमको सुहाइबो हमर पाठागार पे सेही जिंस पोस्ट करनु आपण आमे जोहार करिवु गंगा पानी ठुआर पवित्र मानिउ किंतु अन्य कोन करिवे
ଆମେ delete କରିବୁ ହିଁ କରିବୁ ଆପଣ ରାଗନ୍ତୁ କି ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ଏତିକି କହିକି ଆଜି Thank you. ରହିବା। Thank you very much, everyone, and look forward to. We will be sending the meeting summary. Thank you. Okay, thanks very much. And with that, we end the meeting. Thank you.